I'm not even comparing it with the BE. Even over the RE, what we proposed in the current budget, which is under the consideration of the Parliament, is far higher. It is higher by 1.55 lakh crores and 2.9 lakh crores. And it is 2.91 lakh crore more than the actual of 21-22, the year before. The capital expenditure for 23-24 is at 10 lakh crore, which most members have heard me say, whereas in the year 1920, this amount was only 3.39 lakh crores. And if I go to the last full budget presented during the UPA's 10 years, that is in 2013-14, it was only 2.91 lakh crores. 2.91 lakh crores in 13-14, the last of the UPA budgets. 2019-20 budget, which is the budget before the pandemic, it was 3.39 lakh crores. So the states will be the partners in this massive capital expenditure exercise. And in the budget of 23-24, that is the current budget, we have made an allocation of 1.3 lakh crores to the states as interest-free capital expenditure loan, which will run for 50 years. So 1.3 lakh crore is being given to states as 50-year loan without interest. So the state's interest has always been kept up and kept in our mind, and making sure that we are in time giving them what is their rightful amounts. Sir, whilst I go through the members and their points, I'm just broadly telling you the issues which this budget addresses and made specific allocations. Broadly, the headings are middle class, employment related, MSME related, agriculture related, rural population related, health related, and green growth related. So I will very quickly just give you the bullets under each of them so that all of us have a complete comprehensive picture on each of these headings. For middle class, sir, the new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Will reduce tax liability. This proposal will reduce tax liability for majority of middle class taxpayers. New regime will be the standard or default. Taxpayers will have to opt for the old regime if she or he wants. Doubling of investment limit in small savings schemes from 15 to 30 lakh, and increase in limit of monthly income scheme benefiting senior citizens and others through high interest rate with full safety will also benefit the middle class. And finally, for middle class, new small savings scheme for women and girls with attractive interest rate of 7.5% for a 2-year tenure. So here, I can't see member N.K. Premchandran, who asked for a clarification regarding the new income tax regime. He said, I'm paraphrasing, I'm not quoting his exact words, but he said that under the old tax regime, a common man can save up to 4.5 lakh on his income from 9 lakhs. On his income of 9 lakhs, he can save up to 4.5 lakhs. However, he said in the new regime that won't help at all. In reality, sir, it is very difficult, actually, strictly speaking, for a common man who earns 9 lakhs to avail 4.5 lakhs in deduction. And after all, since he has to run the family as well as think of constantly of how best he can reduce the taxes. So when he's earning 9 lakh annually, 4.5 lakh in deduction itself will be quite a large and effort
effort-ridden exercise. Enhanced rebate, whereas what we want to explain here, since the enhanced rebate in the new scheme is unconditional, it will greatly benefit income earners in the lower tax brackets as they have higher disposable income in their hands for meeting their essential expenditure. So I wanted to just assure Member N.K. Premchandran that it's not always possible for a 9 lakh salaried person to have 4.5 lakh under exemption and then also be having enough money to spend for his family. So that was for middle class. So if I move for employment-related information from this budget, sir. Increase in capital expenditure with large multiplier effect, and that's 10 lakh crores, and of which 1.30 will go to the states as well. Increased credit of 2 lakh crore at lower interest rate to MSMEs, who are the biggest job creators. Lab-grown diamonds have been given a fillip, which is a sunrise sector, and it has very high employment potential. Multidisciplinary courses for medical devices to create skilled manpower in futuristic medical technologies, manufacturing and research. That's also aimed at greater employability for our people. Job opportunities through Make AI in India and Make AI Work for India in educational institutions is clearly giving that cutting edge benefit for our students. Comprehensive tourism package for 50 destinations, creating direct and indirect jobs. PM Kaushal Vikas Yojana 4.0 to be launched, covering new age courses like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and soft skills are all aimed at giving that lead advantage for those who come out of colleges with these skills, who can then be employable straight away. 30 Skill Indian International Centers. 30 Skill India International Centers will be established to train youth for international job opportunities, inclusive of any optional language which they would want. So this is about employment, particularly from this budget. For MSMEs, sir, Vivad Se Vishwas. Vivad Se Vishwas scheme for refunding forfeited amounts of bid performance security, which is given during COVID period in all government and PSU contracts with MSMEs. One point which I've missed out on employment is how in the government, in this year, every month, Prime Minister, also the ministers have all gone all over the country to give employment letters in government jobs. About 10 lakh jobs are being offered in the government, and that cannot be missed out. Sir, Vivad Se Vishwas scheme for MSMEs, and also to encourage timely payment, deduction of expenses for tax purposes allowed only when payment actually made to MSMEs will greatly benefit MSMEs, because most often large companies retain them and really take the offset benefits for it without really paying the MSMEs. We want to encourage the payment of MSMEs because they are the ones who generate a lot of local jobs. Revamped credit guarantee scheme for micro and small enterprises with additional credit of 2 lakh crores and reduction of interest rate by approximately 1%. And also, the presumptive taxation limit has been enhanced both for MSMEs and for professionals. Sir, I have 3 more of these main subjects, so that from this budget we'll be able to club it all together to see for that head as to what we have given. For agriculture, agricultural credit target has been enhanced to 20 lakh crores. India will be developed as a global hub for Sri Ann, that is the millets. Agricultural Accelerator Fund for agri-startups. Major increase in storage facilities through cooperatives. Computerization of the PACS PAC.
tax relief to cooperative sugar mills and PACs. That is more than about 9,000 crores, which is going for the benefit of the sugarcane farmers. Decentralized storage facilities through cooperatives to enable farmers to store their produce and sell it at the right time when they will get better prices. And also a new sub-scheme for fishermen, fish vendors under the PM Matsya Sampada Yojana. All this is definitely going to make India's agriculture far more robust. Rural population, sir, huge increase in the outlay for Pradhan Mantri Awas Yojana, 66% increase, and 79,000 crores are being given for PM Awas Yojana. Increase in the outlay for Jal Jeevan Mission from 60,000 crores to 70,000 crores. 15,000 crore mission for particularly vulnerable tribal groups. We talk about inclusion, but when we talk about what is being provided to the tribes, nobody wants to hear that, and they will still question. Sir, I have a request. Today being the Friday, that's a private member business. Since this is financial business is going on, it may be kindly taken up on Monday. सदन की सहमति है? माननीय वित्त मंत्री जी। For health, the last two on which I want to elaborate, 157 new nursing colleges are being created. This also creates jobs both for domestic and international workers. Then sickle cell anemia elimination mission, which is very important for some tribal areas. And new program for research and innovation in pharmaceuticals are the highlights I would like to say for the health area. And finally, sir, the green growth, 35,000 crore towards capital investments in energy security, energy transition, which is being given to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Energy storage projects are being taken up. Funds for scrapping polluting vehicles for both center and states are being given. Amrit Dharohar for conservation of wetlands are being taken up. Exemption of excise duty for blended compressed natural gas. Customs duty exemption for capital goods needed for lithium-ion cells for batteries in electrical vehicles, and green hydrogen mission. So in a gist, I tried capturing all those topics under which the budget had a lot of provisions here and there, but I've put it all together to summarize here, sir. Now I go to those 15 particular groups of issues on which honorable members have spoken. I'll group it all together on behalf of the members and try to address them. The fiscal glide path is the first issue, maintained at the cost of reduced food and fertilizer subsidy. That was a member's apprehension which was put here, saying allocation for food and fertilizer subsidy has been drastically reduced. Was a, if I can call it as an allegation was levied. I want to say here, sir, leveled. 2015-16 till 2019-20, food subsidies have been in the range of 1 lakh crore to 1.12 lakh crores. I'm talking about 2015-16 to 2020. Whereas now in this budget, for 23-24, the projection for food subsidy is 1.97 lakh crores. So it is far higher, in fact double than what was being given in 1920 or even earlier. The provision for food subsidy available in the budget of 23-24, sir, is adequate, we think, to cover all the anticipated expenditure for the PDS operations, and therefore that's not even less. The increase in food subsidy in the last 2 financial years is due to the PM Garib Kalyan Anna Yojana,
to 80 crore people. So the central government now, under the new PM Garib Kalyan Yojana, which has been introduced since December 2022, in the last 2 financial years, I have already said, in the December allocation of PM Garib Kalyan Yojana, which will continue to the Antyodaya and the priority households, the central government will bear all costs of the PDS operation with no cost to the beneficiary or even to the state governments. The entire cost will be on the central government. So, there is just no reduction in the food subsidy, and therefore on that behalf to allege that I am maintaining fiscal consolidation at the cost of reducing food subsidy is completely wrong. मैडम को याद दिलाते हैं, मैडम को याद दिलाते हैं। 5 रुपया कम हो गए। देखो मैं आपको एक सुनो पहले 5 ही तो मिलता था यार। अरे सुनो अधीर बाबू you are a very senior member. Continuously disturbing, it is not to your stature, I am telling you. It is not fair on your part. अरे बैठिए यार ऐसे आपके बीच Sir, today Adhir ji is very conscious. Adhir ji is very conscious. I have always my respect. I have a great respect. Thank you. Surely, with that respect in place, even from my side, Adhir ji is very conscious. 5 kgs कम हो गया है. इनके NFSA 2013-14 में कितने राज्य में NFSA implement किया गया था? कोई 7 states only agreed to go along with them, and even in that it was only 5 kgs. Suddenly क्योंकि मोदी जी ने गरीब के लिए कोविड के समय +5 kg. अरे I also have respect for you Adhir जी, सुनिए ना, क्षमता रखना चाहिए सुनने में. NFSA 2013-14 sir, only 7 states took, and what did it give? It gave 5 kgs. गरीब के लिए क्योंकि कोविड के समय किसी गरीब भूखे ना रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी एडिशनल 5 kg दिया. वो एडिशनल 5 kg को अभी याद दिला रहे हैं. आप तो पहले से नहीं दिए, 5 kg बोले, 7 स्टेट्स में किए, बाकी देश भर में नहीं किए. आज आ गए इतना गरीब के लिए, क्या बात है जी. सर, another point was वो गरीब के लिए फूड को कटवा दिया, इसीलिए आपको फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ. I proved it. No. Now I'll come to the fertilizer subsidy, sir. 2015-16 मैं उनके 13-14-12 में नहीं जा रही हूं अभी. 2015-16 to 2019-20 में fertilizer subsidy has been in the range of 65,000 crore to about 80,000 crore. Then in 22-23, that is this year, provision for fertilizer subsidy was about 1.05 lakh crores. In this budget, which is under consideration here in this parliament for 23-24, this has been raised to 2.25 lakh crores. Oh, sorry, 22-23 के लिए this साल has been raised to 2.25 lakh crores. Why was this raised for the current year so much? Because international prices went up. We had to import at a very high cost. On this, there is some data which I'd like to share with you, sir. Ek bori, which is 45 kgs, I think, of fertilizer, was somewhere in the range of 220 rupees. Whereas we had to import it somewhere in the range of 2,800. The very same 45 kg bori was 2,900 something. Approximately, the import cost had gone up. We imported it all at that cost, but did not put the burden on the farmer. किसान के ऊपर 1 पैसा ज्यादा तब भी नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया. ये टोटल केंद्र सरकार के ऊपर है. Okay?
सर आई वॉज एक मिनट सर, क्योंकि हमारे वेरी एक्टिव मेंबर ऑनरेबल गोगोई इस विषय में उठे, मैं जो विषय बाद में बोलना चाहती थी मैं अभी ही बोल रही हूं। एक्साइज ड्यूटी जब ज्यादा हुआ, फॉरेन प्राइस जब, इंपोर्ट प्राइस जब ज्यादा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता के ऊपर बोझ ना हो ऐसे स्टेप लिया, नवंबर में और जून में, नवंबर 21, जून 22। मैं 1 मिनट सर उस विषय में बोलना चाहती हूं। तब से लेकर आज तक हम तो जनता के ऊपर बर्डन कम हो इसीलिए एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं। इसके उल्टा करने वाले स्टेट्स का नाम लेना चाहती हूं सर। सॉरी, मेरा हिंदी सही आ रही है कि नहीं? हम तो प्राइस कटवाने के लिए कोशिश करके नवंबर में 2021 और जून 22 में कटौती की। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि एक्साइज ड्यूटी को कम करो, किए, मगर तब से लेकर आज तक मैं नाम लेना चाह रही हूं, एक पहले किया होगा, आज दूसरे क्या कर रहे हैं, जो भी हो, उल्टा जनता के ऊपर बोझ पड़ना परवाह नहीं पड़ेगा, करने दो। ऐसे करने वाले लोग का नाम बोल रही सर। एक्टिव हमारे, ठीक है अधीर जी पूरे 2 दिन आप सबका सुना। प्लीज धैर्यपूर्वक सुनिए सर। हमारे एक्टिव मेंबर गोगोई जी, वो उनके हिमाचल के सरकार से पूछना चाहिए, चुनाव जीतकर आने के तुरंत बाद VAT वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डीजल 3 रुपए ज्यादा किया, ये उनका है, ठीक है सर। सर और केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ तुलना कर रही है। वैट इंक्रीज करने वाले आप हो भाई, वैट इंक्रीज करने वाले आप हो। आप बिना सोचे समझे बात ना करो। आपने वैट इंक्रीज किया डीजल के ऊपर, वो भी हिमाचल प्रदेश के। On that note, we have to slip into a very short commercial break. On the other side, we're also tracking these latest pictures coming in from Mumbai, where Prime Minister is all set to flag off the Mumbai to Solapur Vande Bharat Express. Amity University is establishing a most advanced supercomputing facility for research and innovation in the field of artificial intelligence. Scientists and researchers passionate to make a difference in the field of artificial intelligence are invited to contact at ai@amity.edu. पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी।
पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार And cutting across to breaking news coming in, the hearing is underway on Hindenburg in the top court. The hearing is on the short sale. That is Hindenburg in the Supreme Court, where the Supreme Court is asking as to how we protect investors and how do we ensure big losses don't happen. Rhythm Anand Bhardwaj, our legal editor, with us on the broadcast. Rhythm, details from you on what's happening in the top court on the Hindenburg matter. So the Supreme Court is as of now hearing a plea that is seeking a declaration that short selling is the offence of fraud and directions to investigate the founder of Hindenburg should be there for exploiting innocent investors. That is what the top court bench is hearing. This is a bench of Justice Chandrachud, Justice Narasimha and Justice Pardiwala who are hearing this. The petition began around 15 minutes ago when the court said that we want to point out to certain allegations. The Supreme Court asked the Solicitor General, who are you representing? He said, I'm representing SEBI. And then the bench began to discuss the matter, after which there are certain things that the bench has now come out and said. They said that they have brought an issue before the court, and the concern for Supreme Court is how do we ensure the protection of Indian investors? They said very clearly they're not going to do a witch hunt. They're asking, suppose as a result of the short sale, the value of the shares gets depressed depending upon the number of shares in the market, then we want to know how, if this is happening on a small scale, then it's no issue. But if it's happening to lots of investors, then that's an issue. The court is also asking questions as to how they can ensure in future there is a robust mechanism that's in place. Because today, they say the capital is moving seamlessly. Today we have funds. You can move in and out of India. How do we ensure the investor is protected? So the big breaking news coming in from the Adani Hindenburg hearing in the top court is the court says we have to protect investors and say it's led to a loss of 10 lakh crores. How do we ensure it doesn't happen in the future? They're also asking SEBI what role it can play, because these days everybody's in the market. A very well thought of words coming in from the Supreme Court when it's trying to see beyond a certain point. They say we can't enter into policy domain. Can we contemplate of having a committee? So a lot of things that they're asking and stating, and the Supreme Court is trying to say this should not happen in the future. The hearing is continuing, but I must say once again we are seeing the top court extremely concerned about people, extremely concerned about how Indian investors will be working here, and also seeing whether they can work out a mechanism. At the same time, the hearing and the way it's going is very clear that the Supreme Court is not inclined to interfere in the domain of the executive, because they said we don't want to come into the way of the policy decisions that are being made by the government. Right, Rhythm, stay on with us. Niranjan is also joining us from the Mumbai newsroom. Niranjan, pertinent questions being asked by the top court, because beyond the Adani Hindenburg fight, this is really about the larger interest of investors, and that is exactly what the top court is focusing on. Well, that's correct. You know what's also happening is in the last 2 weeks, and you've been seeing the movement in the stock market, Suesha. Most Adani stocks today were trading in the red. In fact, we'll also pull up that stock tracker on the screen that will give you an idea of how the stocks are moving as far as the Adani Group stocks are concerned. But overall, the market
not really impacted because the Adani stocks are sort of decoupled from the market. So that apart, coming to the point, as Rhythm was saying, the court batting for the interest of the Indian investor, saying that if it is true that nearly 10 lakh crore has been wiped off as a fallout of such a report, what are the steps that can be taken is one of the questions that the court has asked. In fact, Rhythm, are you there? Rhythm? Okay, so let me just go through some of the observations of the court just to tell our viewers what's happening inside. Suesha, as we speak, the court is hearing, and the court has given a few instructions. In fact, to Solicitor General Tushar Mehta, who is, by the way, representing SEBI in this case, and the court has said that how do we ensure in the future we have a robust mechanism in place to ensure that we don't have a situation where a Hindenburg research report comes in and that a huge investor wealth is wiped off the markets because of the impact of that particular report. The court is also saying how do we, ensure that there is a robust mechanism in place. Two, saying that, today funds are moving in seamlessly, capital coming in and out of India. How do we ensure that the investor is protected? The bench also making a note, the Supreme Court making a note of how it's led to a loss of 10 lakh crore and how do we ensure as a nation that it doesn't happen again. And the court has asked what SEBI can do in this particular case and asked Tushar Mehta, who's representing SEBI in the Supreme Court, the Solicitor General, who has also said, by the way, that the trigger point in the report is the report. He in fact says, SEBI says trigger point is the report which is beyond our territorial jurisdiction, which is a very significant statement that is made by the Solicitor General, who's batting for SEBI, adding that there are regulations for some of the issues that the courts have discussed in the course of this hearing. And the court has also said very significantly, Suesha, that what we can have is some committee, that some thought process to get some input in terms of the government and what the government can do to take a call. And they eventually, as of now, the court is saying the government can take a call on something like this, whether some modification is required on the statute. Not just that, the court is also saying that beyond a certain stage, we won't enter the policy domain because it really comes down to policy, but there should be a mechanism that it doesn't happen in the future. This is a call that the government has to take. So the Supreme Court saying that such a situation cannot arise where huge investor wealth is wiped off, and this is money of normal people, retail investors, small investors who put their hard-earned money in the markets hoping that they make gains out of it. But when a Hindenburg comes in and when there's a crash like the one we've seen in some of the Adani Group stocks, the court is worried about what really is happening. Not just that. All right, getting in some breaking news now. We're cutting across to visuals from Mumbai right now. And in Mumbai, the Vande Bharat trains are being flagged off. The PM is flagging off the Vande Bharat Express. Live pictures coming in from the financial capital. This is live CST station in Mumbai. And we'll just go across to Alisha, my colleague. That's the Vande Bharat train, an express train capable of going up to speeds of 160 to 180. The crowd there at CST, easily one of the most used train stations, not just in Mumbai but in the country. One of the most crowded stations, one of the oldest train stations in India, where most of the passengers use this route. Getting in more details, and that's Eknath Shinde, the Maharashtra Chief Minister, with the Prime Minister, are flagging off the two Vande Bharat Express trains. Live pictures coming in. Let's see if there is an audio layer, and we'll go across to Alisha, my colleague, who's also live from there, tracking the latest developments. And these are live pictures coming on. आप कृपया विराजमान हो जाएं। और अब CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप में जानकारी देते हुए एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। भारत
संस्कृति और विरासत की भूमि। संस्कृति और विरासत जो सदियों से भारत को एक सूत्र में बांधती आई है और इस सूत्र के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लगातार प्रगाढ़ बना रही है सबकी रेल, भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए भारतीय रेल लगातार हो रही है आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी। और इसकी एक शानदार मिसाल है मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 170 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की पहली रेल की साक्षी बनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हमारी ऐतिहासिक धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखते हुए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए CSMT की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज CSMT स्वदेशी और अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की भी साक्षी बन रही है, जो विरासत के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। मुंबई और सोलापुर के मध्य शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी विरासत। Amity University is establishing a most advanced supercomputing facility for research and innovation in the field of artificial intelligence. Scientists and researchers passionate to make a difference in the field of artificial intelligence are invited to contact at ai@amity.edu. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस
Adani takes a battle to America. He eyes the legal powerhouse against Hindenburg. UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. The UP Global Investors Summit kicks off. Prime Minister inaugurates this key summit. Major faux pas by Ashok Gehlot. He reads out the last year's budget defense, saying only one page got misplaced. In a mega boost to the state of Maharashtra, the Prime Minister is launching the Solapur Vande Bharat Express. And Rohit Sharma's stunt keeps India in driver's seat, becomes the only Indian skipper with a century in all three formats. A very good evening and thank you for staying with us on Republic. I'm Deepthi Sachdeva. Over the next few minutes, we are putting our focus on the biggest story. It is not just about what's happening vis-a-vis the Adani crisis, the Adani controversy. How really are the markets responding? We'll get you an insight into that. Also, remember the entire matter right now being heard by the Supreme Court. And this is our first breaking update that we begin this edition of the news with. Even as we speak, remember the Supreme Court is dictating the order in the entire case. When you had a group of petitions that was moved essentially in the court saying what about the investors, what about their own sentiment, and the Supreme Court hearing on the Adani Hindenburg report. We are learning that the Supreme Court is dictating the order right now. Rhythm has more details. Rhythm, over to you. What more do we know of what the court has said so far and what is expected? Rhythm. So let's tell our viewers, as we are speaking, the order is being dictated in the top court, Deepthi, in this case. And during this, the bench is very conscious about everything that's being said in the case and is going to be reported. The bench begins by passing out an order, which has started where they say that during the course of this hearing, these petitions have been invoked under Article 32. They then say, we have indicated to the solicitor the concern with regards to ensuring there should be a regulatory mechanism within the country and it should be strengthened to ensure investors are protected. They then say they have to be protected against certain volatility that has come in the recent few weeks. They say that in turn would need due assessment because for the disruption of the stability of the securities market. They've also said the existing regulatory framework, relevant factors need to be put into robust practices to protect the investors. The committees can be constituted, etc. These are just words that the court is right now, dictating when they are writing down the order. But the larger picture we've got as we are hearing the observations from the Supreme Court is the main concern that they have is that that they want to protect the investors. And they said they want a framework and they want, they are conscious that it may affect that it shouldn't be affecting the stock market. So even as the hearing is important, let's tell our viewers that the thing that's been most importantly told in the Supreme Court right now is they want to protect the investors. They've said that this issue has been brought forward deeply to ensure protection of Indian investors. They've also said we are concerned about the Indian investor. They told the Solicitor General there should be an open dialogue in this and they want to see what has to be ensuring that for the future there is a robust mechanism that can work seamlessly. As we are speaking, like I said, the bench dictating the order has for now stated that we need to see whether a committee needs to be constituted and whether the existing regulatory framework is enough or there needs to be more done. Most important point that the Supreme Court today has made is they need to protect the investors. So, Rhythm, I'm also hearing that possibly the Supreme Court be looking at creating a panel essentially to be able to study, how we can deal with crisis like this even in the future. Because like I said, this is all about investors. This is not about just a particular business conglomerate. This is about the impact, Rhythm, that a move like this possibly could also have on investors. So
Could that also be in the offing? Could we see the Supreme Court, really wanting to put out a panel to be able to look into issues like this in the future? Good point, but I'm very cautious when it comes to the Supreme Court of even attributing that they want a panel right now. The only reason for this being the Supreme Court itself is saying we are very conscious and cautious when we are passing and stating anything, in this particular case, till it's actually something that the government chooses to do. The reason for that is simple. In executive functions, the judiciary would not want to come into there, and that's something that the court started off by saying we don't want to go into the domain of the center. Even as these hearings are continuing, the bench started off, in fact, by discussing what was happening. This particular case is for the Hindenburg report, and the Solicitor General earlier said it would be premature to answer what and how the trigger point of this was achieved. That is when the court started getting these things, and they said the SG has a रेल्वेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होते. देशाला आज 9वी आणि 10वी वंदे भारत ट्रेन समर्पित करताना मला अत्यंत आनंद होतो आहे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है. आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है. ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी. इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी. ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है. शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है. इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे. और मुझे पता है कि जब वंदे भारत ट्रेन सह्याद्री घाट से गुजरे थी तो लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का कितना दिव्य अनुभव होने वाला है. मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है. ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है. आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है. अभी तक
10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। एक क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। मैं मुंबईकरों को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विशेष बधाई दूंगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इसमें जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है। इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों, नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाइयों और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं।
चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है, उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा, हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार ज्ञापित करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So we just heard the Prime Minister there speaking in Mumbai as he's flagged off 2 new Vande Bharat trains, where he's not just speaking about the big development portion, how the Maharashtra growth, he says, is back on track, but he also took some bit of time to talk of the budget, and he said that this is a budget for everyone, whether that's the poor, the aspirational class or the middle class. And he's also, remember, taken a dig at the opposition there continuously that wants to be a roadblock in this journey that the Prime Minister says is only and only for development. And now from that story, let's shift our focus to the other story that Republic has tracked very, very closely. This is a big announcement that has come in from the state of Assam. This is an announcement and this is a big crackdown against child marriage in the state that is led by Himanta Biswa Sarma. Now, he says that he will go all out to ensure that there are no more child marriages in his state. But the Congress has a problem with this. The Congress is reading ulterior motives into that big announcement that has been made by the Assam Chief Minister. On the other side now, the NCPCR, that remember again is a nodal body when it comes to child rights in the country, has also said that a move like this is not just welcome, but a move like this should be followed by other states as well. कानून भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 से लागू है। लगभग 100 साल बीतने के बाद पहली बार कानून की परिभाषा में एक ठीक कार्रवाई हो रही है, तो ये ज़रूरी थी बच्चों के हित में। और आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से ये कहा भी कि भाई आप लोग भी इसको रेप्लिकेट करिए। ये एक अच्छा काम है जो बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में ले जाएगा, उनको यौन शोषण से बचाएगा। अकेला चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं है जिसका वायलेशन होता है,
भारत में बहुत ही प्रभावी कानून है बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का यौन शोषण अपराध है। विवाह की परिणति बच्चों के मामले में उनका यौन शोषण ही होता है। हम बच्चों के यौन शोषण के लिए किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं दे सकते। तो असम सरकार ठीक कार्रवाई कर रही है और राज्यों को इसको अनुकरण करना चाहिए। आप कितने साल से सर इस पे मतलब आपने संज्ञान लिया हुआ था कि असम में बाल विवाह चल रहा था, और आपने असम सरकार से कब बात की कि इस पे एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, आयोग देश की सभी राज्य सरकारों से बोलता है। देश में सभी राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं, लेकिन एक सरकार अगर इफेक्टिवली ठीक काम कर रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हमको पिछले वर्ष ऐसी भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके बच्चों के सौदे किए जा रहे थे। 12 साल 13 साल के बच्चों के सौदे हो रहे थे कि जब वो शरिया के अकॉर्डिंग मेजोरिटी की एज पे आ जाएंगे तब उनका निकाह पढ़वा दिया जाएगा। और शरिया के अनुसार ये जो मिनिमम एज है ये कौन से साल की है? ये तो एज ऑफ प्यूबर्टी है, तो इसमें तो ये भी नहीं है कि कभी 12 भी हो सकती है, कभी 13 भी हो सकती है जब बच्चा प्यूबर्टी पे आ जाए। तो ये तो सीधे सीधे यौन शोषण को बढ़ावा देना, बच्चों की ट्रैफिकिंग थी। हमको इस तरीके के एग्रीमेंट मिले, हमने आसाम के चीफ सेक्रेटरी को बोला और आसाम सरकार ने इफेक्टिव ऑर्डर्स दिए इस पर काबू करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि पॉक्सो कानून बच्चों का किसी भी रूप में यौन शोषण रोकने के लिए एक प्रभावी अस्त्र है और हर राज्य सरकार को इसका उपयोग बच्चों के हित में करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने एक बहुत ही अहम बात कही है। आपने कहा है कि सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बाल विवाह चल रहा था। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें के सरकारों से, जिनके चीफ सेक्रेटरी से आपने बात की है ये जो दुप्रथा है मतलब रोकने के लिए? हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष 650 जिलों में जिला स्तर पर रिव्यू मीटिंग की। अभी भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, कमीशन की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग चल रही हैं। हम देश के हर राज्य के हर ज़िले के अधिकारियों के साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार बात कर रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या उनको तरीके अख्तियार करने चाहिए जिससे कि बच्चों का यौन शोषण रोका जा सके। Been an extremely irresponsible step, because what has happened is that all women who are pregnant are now not going to the hospital to deliver their child. They are afraid that if they go to the hospital, they will be reported upon and their fathers will be also arrested or their husbands will be arrested. So there are many such cases that pregnant women who have married before 18, instead of delivering their children inside hospitals, are choosing to deliver inside their homes, making the pregnancy and the childbirth unsafe, and in complicated cases leading to death. Today itself, we have got to know that a teenage mother has died because she bled to death because there were complications, and there were no community health workers, no ASHA workers around, because now the ordinary families are afraid of ASHA workers also, because they feel that the ASHA workers will report the matter to the state government and to the local police. So all of this foolish crackdown on child marriage will only increase maternal mortality. More teenage mothers who have complicated pregnancy will. We head into a break right now. On the other side, the UK Review report is warning of Islamist and pro-Khalistani extremism inflaming anti-India sentiment. And also back home in the state of Rajasthan, this is a major faux pas by Ashok Gehlot, who ends up reading out the last year's budget. His defense: he only read one page that belonged to the last year's budget. The BJP has hit back. उन्नीस में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. The Madras High Court earlier today directed the Tamil Nadu police to give permission for the RSS to conduct their route marches in the state of Tamil Nadu. The issue all started in October last year when the RSS had sought permission from the Tamil Nadu government to conduct rallies in the state of Tamil Nadu on account of Gandhi Jayanti and Azadi Ka Amrit Mahotsav. But the Tamil Nadu government, citing various law and order issues, rejected permission for the RSS. When they went for an appeal, the Madras High Court even stated that they can conduct these route marches inside closed spaces, inside grounds where there is closed walls, so that they do not need any permission from the Tamil Nadu police for safety. But rather the RSS went for an appeal, and the Madras High Court has now directed the Tamil Nadu police to give permission for the RSS to conduct their marches in the areas of their choice, and also the RSS has to submit 3 dates of their choice for which the Tamil Nadu police can authorize one particular date for them to conduct these marches in the state of Tamil Nadu. पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे।
पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब Viewers, our top headlines right now. Adani takes battle to America, hires legal powerhouse against Hindenburg. UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. Uttar Pradesh Global Investor Summit kicks off. Prime Minister inaugurates a key summit. Major faux pas by Gehlot reads out last year's budget. Defense only one page got misplaced. In a mega boost to Maharashtra, Prime Minister launches Mumbai to Solapur Vande Bharat Express. Rohit Sharma's stunt keeps India in driver's seat, becomes only Indian skipper with a century in all 3 formats. Yes, we are getting some big breaking on alliance for 2024. A big election breaking coming in, viewers. And what we're learning right now is that AIA-DMK's alliance with the BJP is going to continue. And AIA-DMK is making it very, very clear that the alliance will continue with the BJP. And the AIA-DMK will be fighting with NDA. This is coming in after EPS has declared this, that AIA-DMK is with BJP for the year 2024, those elections as well. Let's go ahead and go to Varshini, who's joining us live right now. Varshini, a lot of news was doing the buzz, a lot of questions were being raised about whether the alliance is going to continue, but we are getting some updates coming in. Just take us through what information we have got on this big election breaking. Definitely, yes, Shivangi. You see, the alliance between the AIADMK party and the BJP for the under the NDA is definitely one alliance that the whole state has been looking up to, because this Erode East bipole has been a very big issue right from the beginning. It was announced because of the internal party conflict that was going on between EPS and OPS. But to say the fact that we can understand from all the happenings in the recent past, be it the state chief of BJP K. Annamalai or the Edappadi K. Palaniswamy, who is the interim general secretary of the AIADMK, they've been sure about one thing, that is their alliance. And now when the campaigning has begun for the Erode East bipole, and several leaders from both the parties are at one spot in the Erode East constituency, where they are campaigning for the AIADMK's EPS faction candidate under the 2-leaf symbol, and that is when all these kind of informations are being let out. And it's very surprising, because the DMK has been focusing on only about the candidate, but the AIADMK and BJP have together come down to the Erode East constituency and they are campaigning.
Well, when the AIADMK's interim general secretary Edapadi Palaniswamy met with the press, and when the press asked him about the kind of alliance that is happening between them, he made it very clear that their alliance is very intact and that it will be continuing for 2024 as well. When asked about a strain in the relationship between the ADMK and BJP, he also very clearly mentioned that there is nothing of that sort. Every party will work for its own development, and that is what the BJP in Tamil Nadu is doing and ADMK in Tamil Nadu is doing. Therefore, when put together, when we come as a alliance, we will definitely put the needs of the people in front and do not worry about the party. It's all about giving a good governance to the people, and that is what we will focus on in the upcoming days. It's what Edapadi Palaniswamy has mentioned, and he says that there is no strain in the relationship between ADMK and BJP, and he also mentions that this will definitely continue in the upcoming 2024 Parliament elections as well, Shivangi. Right, Varshini, and in 2022, we had seen that there's some cracks were appearing within the AIADMK BJP alliance after what happened in the civic polls. But now it seems things are back on track. What can we expect next right now? Any meetings between the leaders of both the parties, and what can we expect in the next few days as, of course, election season is also coming very, very soon, Varshini? Shivangi, see, as of now, all eyes are on the EODs, the bypolls, and both BJP and ADMK have come together, joined hands in supporting the candidate from the camp. If OPS has returned his candidate from the election, and he's also lent his support to the candidate under the two-leaf symbols for the AIADMK party, therefore, all these important leaders of there to make sure that they are able to produce. All right, Varshini, I'll be connecting back with you, getting some problem with your audio, but thank you for getting us all the details. So this is a very, very big political development, viewers, where a big breaking has come on the alliance. AIADMK's alliance with the BJP will be continuing, and AIADMK makes it very clear, viewers, alliance with the BJP will continue, and AIADMK to fight with NDA. This is what EPS has said. He's declared this. And remember, the past few months, in fact, there was some tension and cracks being seen. But right now, a confirmation coming in that AIADMK's alliance with BJP is going to continue. This is the sort of temporary arrangement that has been made by the BWSSB now. Even though they have asphalted a part of the road with gravel and also some stones and sand, the major part of the road which has caved in has still not been covered. There has been some sort of partial work which has been done, which has been done as well. So you can clearly go on and look at it now. This is, this is the sort of temporary fix that has been put by the BWSSB. But the sort of road cave-in that is reported here is something that needs to be done. And this particular temporary fix has been done by the, by the motorists and the residents who pass by here. But until now, there has been no sort of concrete action which has been taken by the BWSSB, which is the concerned authorities as well. Viewers, the much more coming up on the other side. Major faux pas by Gehlot reads out last year's budget. Defense only that one page was the one which was misplaced. In a mega boost to Maharashtra, Prime Minister launches Mumbai to Solapur Vande Bharat Express. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और 4 Russian tourists, 1 hotel in Raigada, and 2 mysterious deaths. Bittu Roy Chaudhary and Priyanka Sharma uncovered the story of Russians in Raigada. Russians in Raigada, Republic originals this weekend only on Republic. Viewers, we're live and breaking this a Friday evening. And a short while back, it was a major faux pas moment for Rajasthan Chief Minister when he read out last year's budget in the Assembly and realized the same minutes earlier. Later on, he realized that even the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, took a dig at Gehlot for reading out last year's budget. A very, very big faux pas has happened. Here is the exact moment and the reactions we're getting to it. Listen in. अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों क्यों करा दें। 1 मिनट, सॉरी। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे बजट कोई और किसी के हाथ में लग गया है कि वो कर्मचारी भी क्यों नहीं हो। आपको याद हो एक बार बजट लीक हो गया था तो सबको मालूम है क्या हुआ। बजट लीक ऐसे होता है क्या? बजट एक सेंसिटिव होती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए तो खुदा ने कहा देते रात 7 दिन रात भर वहीं रहते हैं अंदर, बाहर निकलते ही नहीं हैं और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है।
उसमें मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद ने सॉरी फिर उस पर निकल लेना है। जैसे मैं मेरी स्पीड रोकी, मैंने सॉरी, वो बात मैंने रिपीट किया, तो फिर ये हंगामा की जरूरत क्या थी? मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस पर मेरे सॉरी, मतलब क्योंकि बजट पड़ रहा है और रोकना पड़ रहा है, तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। और इनकी दिल्ली में जो है बीजेपी वाले, वो मैंने सुना वही लग गए पैर से बात करने के लिए, इनके हाईकमांड वाले लोग। ये तो इनकी स्थिति है। सर ये अगर ये सब है, राजस्थान मैडम, बाकी भी बोलती हूँ सर, स्टेट्स, हाँ राजस्थान, नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया, पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं सर, उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं सर, ये भी सर मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है? सर मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong sir. इशू लीक होने का, क्योंकि लीक नहीं हुआ है, ये तो इनके ऑफिसर्स के बीच में, पर इशू जो है वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह एक डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर, इतनी केयरलेसनेस के साथ। अगर वो अपने बजट को इतनी केयरलेसनेस के साथ पेश करने के लिए आया है, तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है, और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है। Viewers, much more coming up on the other side. UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiments. Plus, Rohit Sharma's stunt keeps India in the driver's seat, becomes the only Indian skipper with a century in all three formats. Stay tuned. में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू,
ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली। 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। Viewers, top sports action which is happening right now. Latest updates. Leading from the front, Rohit's century puts India in control of day 2 of the Border Gavaskar Series first match. Indian skipper Rohit Sharma makes a record first ever Indian captain to score century in all 3 formats. After cribbing over pitch, Australian cricketers face Jadeja Ashwin's spin wrath. Ashwin becomes the second fastest bowler to take 450 test wickets, only behind Sri Lanka's off-spinner Muralitharan. Virat Kohli fails to end Test century drought since 2019, falls victim to Australian spinner Todd Murphy. And Cristiano Ronaldo scores 4 times for Al Nassr, goes past 500 goal mark in club career. And viewers, we are getting you more details on the other side. History has been made. ISRO successfully lifts off SSLV D2 in the sky. Beautiful launch of SSLV D2 US 07 on a bright sunny morning. Even tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकियान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 US 7 मिशन। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू,
ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी Viewers, a new era in space. History has been made. The Indian Space Research Organisation launched its small satellite launch vehicle SSLV-D2 from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. ISRO successfully has placed the Earth observation satellite and 2 core passenger satellites into a 450-kilometer circular orbit around the Earth. Here's more. 1-0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07. It's a historic moment for India. ISRO's SSLV-D2 mission was successfully completed. This was ISRO's first launch in 2023. This rocket stage with carbon fiber motor. The third stage SS3. The launch comes months after the partial failure of the maiden flight. Today, SSLV-D2 has placed the EOS-07 satellite in its intended orbit very accurately, and I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV-D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. The objective of ISRO's mission is to place these 3 satellites in an orbit around the Earth, while JNS-1 is a 10.2 kg satellite. EOS-07 satellite separated. The 8.7 kg Azadi Sat-2 is combined effort of about 750 girl students across India. It's a proud occasion for ISRO that we have now a new launch vehicle to be offered to the launch vehicle community. This would not have been possible but for the effort of a number of people. I thank all of them for the tremendous support they have offered to us. SSLV lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota for a 15-minute flight to low Earth orbit. The key feature of SSLV is low cost with faster turnaround time and launch on demand feasibility. With its combined effort, ISRO successfully introduces SSLV to the world. Mission has been fully accomplished. Bureau Report, Republic TV. मिशन इस तरीके से पूरा हुआ। Viewers, much more coming up on the other side. UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiments. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन,
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। A very good evening. Thank you for staying with us on Republic. I'm Deepthi Sachdeva. Our top focus on this edition of the news is on a report that's coming in from the UK, but a report that has got the UK very, very worried. Now, what is the India connection to that report? Remember, time and again, India has stressed that there are elements that are being pushed by Pakistan to fan tensions and sentiments against India. Also, when it comes to the big Khalistani plot in the way to malign India. It's for the very first time that you have a UK report officially recognizing that threat and saying we need to do something about it. So we deep dive into that subject and much more. First up, the headlines on top of 5. Adani takes the battle to America. He eyes the legal powerhouse against Hindenburg. The UK review report is warning of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. In more news, UP Global Investors Summit kicks off. The Prime Minister inaugurated the key summit earlier. Major faux pas by Ashok Gehlot. He reads out last year's budget. He defends it, saying only one page got misplaced. In a mega boost to the state of Maharashtra, the Prime Minister launches the Mumbai to Solapur Vande Bharat Express. And Rohit Sharma's stun keeps India in driver's seat, becomes the only Indian skipper with a century in all 3 formats. So first up, let's get us more details of what this UK report is all about that we just spoke about. The UK review report is warning of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment.
Now, what this essentially means is that for the very first time, you have a major report that has been authored by agencies in the UK that is underscoring the same concern that India has raised from time and again. Now, this is actually a 192-page report, the details of which will also flash on your screens. So I'll quickly read out what we know more about this report, and I'll also request our producers to put highlights of that report on your screens. Like I said, this is a report that runs into a good 192 pages. The operative parts deal with how an anti-India rhetoric has been flagged off in the review. It warns against anti-India rhetoric over Kashmir, over pro-Khalistan extremism in the UK. It warns of radicalization of the UK Muslims. Rhetoric also from Pakistan impacting the UK Muslims. It is also warning against the false narrative that is being tried to build by a certain few. Now, time and again, like I said, this has been a matter of concern, particularly with New Delhi, that has raised this issue time and again with the UK. For the very first time that you have a UK official report that is speaking about the growing dangers of these elements, and it says we need to act on it sooner rather than later. On the bottom of your screens, you're looking at more details that we have recovered from that report now. That is in the public domain, and more images also, remember, of such instances that have come to light, particularly in UK, in London and in the suburbs, that have raised that palpable issue of threat when it comes to radicalization. Also the fact that these are elements from Pakistan fanning that tension. And did anyone take note earlier? Because like I said, in spite of the fact that New Delhi has raised this issue time and again with its counterparts in the UK, we haven't seen much of a movement or even acknowledging that there is a real concern. It has been a very timid response, but this time around, it is a very, very direct reference to Pakistan. It's a scathing indictment of the role that Pakistan, remember, has in fanning terrorism, in leading to elements of radicalization, something again now that has started to become a global worry. And Sanika also joining us now live from our Mumbai newsroom. She has more details of this report that we are talking about. Sanika, if possible, why don't you take us through the operative part of this report? Like I said, up till now, it's been a very timid response, but for the very first time, you have the name of Pakistan that is mentioned in this report, and something that India had again and again, Sanika, been underscoring. So now, Deepthi, this was actually a committee that was reviewing UK's anti-terror, the counter-terror operations and the counter-terror strategy that has been announced very recently. And these were the recommendations that this committee, that this scheme was given. This was a recommendation to the Home Secretary that was made. And as per these recommendations, they have flagged off that Islamist extremism is a primary threat to UK. And they also said that the radicalization of UK Muslims over Kashmir, and they've
flagged off this threat, as well as they've called the pro-Khalistan extremism potentially toxic. Now, just to give our viewers an overview of the report that has been made, it says that the anti-India rhetoric has been flagged off in the review. Now, this is very important in the light of the violence, the anti-Hindu violence that took place in Leicester a few months back. So this is one of the measures that has been recommended by this committee to the UK Home Secretary as far as the fight against terrorism is concerned. They warned over the anti-India rhetoric using the issue of Kashmir. Now, this report has also named a Pakistani cleric who has called for violence. Now, this report has said that there is evidence that a Pakistani cleric has made calls for violence using the issue of Kashmir. They've also said that there is a pro-Khalistan extremism that is emerging in UK. Which is potentially toxic. Now, remember, Deepthi, in the year 2018, our colleague Shravan had travelled to UK. He had in fact stung a few pro-Khalistani groups, and that is when Republic had in fact spoken about and exposed the Khalistani threat emanating from the UK soil. So now this report has also flagged off this concern in the UK of the growing Khalistani, of the growing patronage to Khalistani elements in the United Kingdom. Now, what we can also tell our viewers is that UK Home Office has taken note of this entire report, of the suggestions that were made by this committee, and the UK Home Secretary has in fact said that the threat from terrorism is becoming more complex by the day. Islamist terrorism remains a primary and deadliest threat. It is of primary concern. The Islamist terrorism is of primary concern, and greater emphasis will be placed on tackling Islamist ideology. And also, the threat emanating from Khalistani ideology has also been taken note of in the United Kingdom. All right, Sanika, for the moment, I thank you quickly. Also, Colonel Rohit Dev is joining us on the broadcast for his reading into this report and the timing. You know, Colonel Rohit Dev Saab, we've time and again spoken that, you know, radicalization is a real threat, how there have been certain people talking about Hindu phobia. You've seen instances that have been reported from London and, you know, various suburbs, particularly in and around London, where we have seen such instances. But till now, the UK has been extremely timid in even realizing or, you know, calling out radicalization, and that too coming in from Pakistan. But for the very first time, it's coming on record what India has been underscoring for the last many years. Right. So when something strikes you firsthand, that bitter experience is something what you know, the British government has realized now. I'll bring out 2 or 3 facets of this. A, if you go back to the 1970s and if you see the linkages of funding, whether it was happening from the Middle East or it was being orchestrated sitting in UK by the tenants of the group we wanted to create an Islamic caliphate, we've also seen over the last 3 decades how the Pakistani militia or the military, retirement, post-retirement, pre-retirement, have been buying land and trying to follow this method of putting money from other countries into UK to develop this homegrown Muslim, kind of a fear and kind of a coterie to do anti-India activities, anti-progressive nation activities, and to raise the Islamic caliphate. That's a given. Anybody who says today in this world that Islamic caliphate as a dream for some people is not true, it's a fallacy, I think those people are not talking straight. The second part is, if you see the way the certain sections of the West, I'm not taking names here, but certain segments of the West, to include the governments, in the rear, to include financial institutions, to include business houses, to include many foundations, they have been targeting, and you have brought it as a channel also for the last 3 years, various edifices of India's democracy. And India's democracy is rested on a civilizational core value. And when you see people are very cunningly and connivingly using that Hindu phobia at one end against India, and also attempting to raise the Islamic caliphate. In 1971, when Brigadier Malik co-authored with the direction of Ziaul Haq that book called Quranic Concept of War, and I keep telling it to every Indian, please read it.
and let us understand that whatever is written in that book as an instrument of homegrown terror in Pakistan, or exporting terror, or brainwashing people, how to use the ill-gotten money from the Middle East, which was funding Pakistan for a long time, how to beg, borrow, steal, which Pakistan has been doing on various garbs, whether it was being a proponent of the Cold War in Afghanistan or any other measure. So I see this entire Islamic radical thought process is growing and growing. You see the crisis from Syria, you see the crisis in other parts of the world, you see how migration is taking place. Today, UK is in a stage that it is taking a notice of what's happening, even in its immigration policies. So that is where it's leading. The US is next. US may have been thinking for the longest time that they were secure. Now you are finding these older, the proponents of developed world understanding what India was saying for the last 1.5, 2 decades, and primarily being very vocal in the last about 7-8 years. And that is where we are leading to. So Islamic radicalism is not a fallacy. It's a truth. It's staring at us for the last many decades. But glad that the British government has realized this. Their internal notes are now coming with researches. And it doesn't end here. It's a very slow-moving kind of a philosophy which also wants to usurp power. They want to take on power. You see, various sections, you have linkages. Somebody's become a mayor in some city, somebody's become something else, somebody's controlling deep state finances. And so that's the nexus growing. And this nexus which is growing is linking to financial funding institutions which are not amicable, say, to the UK, to India, to other countries as well. And I'm not saying they're collective against us. They pick up countries where they want to, make this mayhem to occur or this commotion to happen. India, unfortunately, was at the receiving end. I think, Colonel Saab, you've taken. Yes, you've actually gone very deep in that issue, and that's important because, a lot of apologists back here in the country still are not willing to believe the report. But what we'll do is I'll thank you right now for the moment. But through this evening, we look forward to talking to you again, as Republic will keep its top focus on that big story. Islamist radicalization is real. It's a real threat. It's a UK report that is underscoring that threat. Why? Because it believes that right now it is facing that same threat in its backyard. On the other side, in fact, we'll keep getting you more details of that big story. Shifting our focus to back home, a major political controversy. It's a fresh face-off between the BJP, the BRS in the state of Telangana, where the Telangana BJP state president, Bandi Sanjay, has made a very, very controversial statement. Now, he says that if the BJP is voted to power in the state of Telangana, he says we would end up demolishing the domes of the newly built state secretariat that reflects the culture of the Nizams, is what the BJP says. Now, why is this important? Because this is just coming days ahead of the inauguration of the Telangana Secretariat building that's expected on the 17th by the Chief Minister, KCR. Now, BRS has also hit back, and the BRS says the statement is highly derogatory, it's irresponsible. So let's play our reactions we've gotten from the BJP and the response from the BRS. మొత్తం 1500 కోట్లతోని ఇలా సచివాలయాన్ని తాజ్ మహల్ కడుతుంటే రాణి అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా ఆ భూములు కూల్చేస్తాం, పక్కా కూల్చేస్తాం భూములు. BJP's Telangana President Sanjay's statements on Telangana Secretariat is highly irresponsible and derogatory in nature. This man is notorious to make such statements for cheap political mileage. Even in the past, he made such statements like he will dig mosques, he will break the vehicles that will play Bhagavad Gita during the final rites. And these statements are made with a cheap political agenda, and BJP central leadership is encouraging such agenda in Telangana. समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अलजामिया तोसैफिया अरबी एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया और इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं और इस संस्थान के बारे में बताएं। ये भव्य संस्थान अलजामिया तोसैफिया अरबी एकेडमी का
चौथा कैंपस है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। Just right now on our screens coming in from Mumbai, the Prime Minister has inaugurated a new campus of an educational institute by the Dawoodi Bohra community. This earlier, remember, he was also inaugurating the Vande Bharat Express. This is his second important engagement of the day. You see him there flanked by the Chief Minister of the state along with the Deputy Chief Minister. Now, the new campus of the academy, which is going to be the Principal Education Institute, is located in Marol. This is suburban Andheri. And the Saifai Academy is working to protect the learning traditions, the literacy culture of the community. The Prime Minister also had taken to the social media a little earlier and recalled how he's had a warm relationship with the community. He's met with its religious leaders on numerous occasions, both in the country and also abroad. And just to tell you that the Dawoodi Bohra community is a subgroup within the Shia Islam that is renowned for its business acumen. The Prime Minister has earlier also flagged off to Vande Bharat trains, and now he is at this event. Alisha, you know, it's not just loaded with a lot of message when it comes to development, putting growth back on track, Alisha, but a lot of symbolism also in the Prime Minister's visit this time to the state of Maharashtra. Well, yes, Dipti, you rightly pointed out, because this is the second visit to Mumbai specifically within a month, and we already saw that the Prime Minister has inaugurated a 9th and 10th Vande Bharat and dedicated to Mumbai, which will really ease the communication, the transportation for the people. But now what we have been seeing on the visuals where the Prime Minister Narendra Modi, who inaugurates the Mumbai campus of Al Jamiatul Safia Arabic Academic, which is located in Andheri's Marol, and along with him is accompanied by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and we can also see Senda Mufaddal Saifuddin, who is the 53rd Al-Dai-ul Muttaq and the head of Dawoodi Bohra community, who is present to welcome the Prime Minister for the program. While talking about the inauguration, well, this is the fourth campus of Al Jamiatul Safia Arabic Academic, which has also been known as Jamia. It is the premier educational institute of the Dawoodi Bohra community, and here we can see it has already been inaugurated by the Prime Minister of India, Narendra Modi, and has also been present where the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, along with dignitaries. But yes, this visit where we can see Prime Minister has visited twice in Mumbai within a month. Earlier, he also addresses a public address in BKC. But while talking about the today program, where he flags off Vande Bharat, which is the 9th and 10th Vande Bharat, which has already been dedicated to Mumbai, and it will be take off from Mumbai CST to Solapur, and the 10th Vande Bharat, which will goes to CST till Shirdi. But now where we see that the Bohra Academic has also been inaugurated, and here the visuals that we have been seeing where the Prime Minister is being accompanied by Chief Minister and Deputy Chief Minister. Yes, Alisha, for the moment, thank you. And, you know, the Prime Minister had just tweeted about yesterday where he spoke about this particular event, and he said that he's going to be in Mumbai tomorrow. He's already there, and he said he will join the program to mark the inauguration of the new campus of the Arabic Academy. He also said, in line with the great ethos of the Dawoodi Bohras, I'm sure this campus will provide a futuristic learning environment to students, unquote. दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता उन्हें बताते हुए इस परिसर के बारे में प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण किया।
दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके साथ प्रधानमंत्री इस कैंपस का निरीक्षण करते हुए, इस संस्थान का निरीक्षण करते हुए, नए परिसर के निरीक्षण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, समझते हुए, देखते हुए और निरीक्षण करते हुए। पीएम मोदी ने अलजामिया सैफिया के नए परिसर का आज उद्घाटन किया मुंबई में और वहां पर बोहरा समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुंबई को 2 वंदे भारत की सौगात दी। इसके साथ ही 2 लिंक परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ आस्था के केंद्रों का भी विकास, आस्था के केंद्रों तक कनेक्टिविटी, और जब आस्था के और शिक्षण के केंद्रों की बात करते हैं तो उस दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस कैंपस का उद्घाटन, जो कि अलजामिया सैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है, वहां पर बोहरा समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। समुदाय के सर्वोच्च नेता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब परिसर का निरीक्षण किया तो उस वक्त समुदाय के प्रमुख लोग प्रधानमंत्री के साथ इस परिसर के निरीक्षण के वक्त प्रधानमंत्री को बताते हुए और प्रधानमंत्री भी वहां पर निरीक्षण करते हुए। तो ये भव्य कैंपस है, चौथा कैंपस है अलजामिया सैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस, और प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। बेहद आत्मीय ये दृश्य जब प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता के साथ मिले। प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण भी किया और वहां पर गणमान्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। और ये दृश्य उस वक्त के हैं जब बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बेहद आत्मीय ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये भव्य संस्थान अलजामिया सैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है। प्रधानमंत्री ने आज इस नए परिसर का उद्घाटन किया। ये दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है और चौथा कैंपस है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। और इस मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समुदाय के बीच काफी मजबूत रिश्ता रहा है और पीएम मोदी कई मौकों पर इस समुदाय की देशभक्ति की तारीफ भी कर चुके हैं। So you're looking at these live images right now coming to us from Mumbai, and you have seen how significant this outreach is also, because the Prime Minister, remember, has worked very, very closely with this community, and
He's also, remember, specifically in all his outreaches with the BJP cadre, he's also spoken about how the BJP needs to extend its outreach to the Pasmanda and the Bohra community. On the other side of this quick break, we are back with more details on why this visit is so significant. $1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? Arani takes battle to America, hires legal powerhouse against Hindenburg. UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. Uttar Pradesh Global Investors Summit kicks off. Prime Minister inaugurates the key summit. Major faux pas by Gehlot reads out last year's budget, defends and says only one page got misplaced. In a mega boost to Maharashtra, Prime Minister Modi launches Vande Bharat Express from Mumbai to Solapur. Rohit Sharma's hunt done, keeps India in driver's seat, becomes only Indian skipper with a century in all 3 formats. It was an embarrassing moment for Rajasthan Chief Minister when he read out last year's budget in the Assembly. He realized it minutes after the episode took place, only when his party MLA came to tell him in his ears, whispered in his ears, that he was reading the last year's budget. In fact, the Finance Minister, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman also took a dig at Ashok Gehlot. Here's what happened in the Rajasthan Assembly and the reactions to it. अब मैं
हर आय वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे बजट कोई और किसी के हाथ में लग गया है कि वो कर्मचारी भी क्यों नहीं हो। आपको याद हो एक बार बजट लीक हो गया था तो सबको मालूम है क्या हुआ। बजट लीक ऐसे होता है क्या? बजट एक सेंटिटी होती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए, पर खुदा ने कहा देते रात 7 दिन रात भर वहीं रहते हैं अंदर, बाहर निकलते ही नहीं हैं और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। उसमें मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद ने सॉरी फिर उसमें से कर लिया ना। जैसे ही मैं मेरी स्पीड रोकी मैंने सॉरी, वो बाद में रिपीट किया तो फिर ये हंगामा की जरूरत क्या थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस वक्त मेरे सॉरी, मतलब क्योंकि बजट पढ़ रहा है और रोकना पड़ रहा है, तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। और इनकी दिल्ली में जो है बीजेपी वाले, वो मैंने सुना वही लग गए पैर से बात करने के लिए, इनके हाईकमांड वाले लोग। ये तो इनकी स्थिति है सर। ये अगर ये सब है, राजस्थान मैडम, बाकी भी बोलती हूँ सर, स्टेट्स, हाँ राजस्थान, नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं सर। उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं ये भी सर। मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है सर। मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड नोबडी शुड बी एबल टू बी इन दैट पोजीशन, बट टुडे इट हैपेंड, सो आई हैव टू मेंशन इट, सो नथिंग रॉन्ग सर। इशू लीक होने का, क्योंकि लीक नहीं हुआ है, ये तो इनके ऑफिसर्स के बीच में, पर इशू जो है वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह एक डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर, इतनी केयरलेसनेस के साथ। अगर वो अपने बजट को इतनी केयरलेसनेस के साथ पेश करने के लिए आया है, तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है। और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है। So that is the entire controversy that is playing out in the state of Rajasthan, with Ashok Gehlot reading out the old budget in this year's budget in the assembly. A huge political fight also breaking out. Chief ministers of different states also taking a swipe at him, including the Union Minister of Finance, Nirmala Sitharaman. We will keep a close watch on the developments there and the reactions coming in, getting you a quick wrap of other stories. Supreme Court bench of Justice Sanjeev Khanna and MM Sundaresh has heard Hindu Sena plea seeking ban on BBC and dismissed the plea. Top court has said plea has no merit. Central government has cleared appointments of 2 High Court Chief Justices who were elevated to the Supreme Court. Justice Rajesh Biddal and Justice Arvind Kumar have been elevated. Notably, the appointment brings the total strength of the Supreme Court to its maximum of 34 judges.
Border Security Force shot down a drone attempting to intrude into Indian territory from Pakistan. According to BSF officials, they have recovered 3 kg heroin, 1 China-made pistol, cartridges and a magazine from the drone. BSF has further added that the drone was deployed along the international boundary with Pakistan Punjab Firozpur sector. The deadlock persists between Pakistan and International Monetary Fund as the two sides have failed to reach the staff-level agreement to unlock the $1.1 billion loan tranche. Uttarakhand Berozgar Sangh has called for a statewide bandh in protest against the lathi charge on students in Dehradun. 13 protesters, including Union President Bobby Panwar, were arrested on Thursday after the youth was staging protests and demanding CBI probe into recruitment irregularities. Uttarakhand Chief Minister has directed Chief Secretary for a detailed magisterial inquiry into the law and order situation and the entire sequence of lathi charge. After checking all the facts and circumstances, a detailed report will be made available to the government. कल का जो एक प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें हमने सुरक्षा की सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। जो भी कल शांति व्यवस्था भंग करेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, पुलिस के कार्रवाई पर विश्वास रखें। अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसको भी हम निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करेंगे। और The Geological Survey of India said it has found lithium deposits for the first time in the country. India has lately been looking to strengthen its supply of key minerals, including lithium, that will be critical for furthering its electric vehicle plans. GSI further said in a statement that 5.9 million tons of lithium inferred resources have been established in the Riyasi district of the Northern Union Territory of Jammu and Kashmir. Mohammad Fazal's brother has been allegedly assaulted in a road rage case. The father has alleged it's a pre-planned murder attempt. Fazal was killed in July 2022 in retaliation to the murder of BJP worker Praveen Netaru. Congress MP Gaurav Gogoi has slammed Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma for campaign against child marriage in the state. This comes after a 16-year-old pregnant married girl died while she was on her way to hospital in Assam. Narrow escape for former Jammu and Kashmir Minister Lal Singh as his vehicle met with an accident. Accident happened while he was trying to save a cow on the road in Ghagwal area on Kathua-Samba border. पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए एक अत्यंत भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में यह उत्तर प्रदेश उभरा है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप यह हो गया है। आज भारत विश्व में इन्वेस्टमेंट का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया की विकास की धुरी भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी और उसमें उत्तर प्रदेश एक प्रभावी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। यूपी राइजिंग यानी अप राइजिंग और इंडिया राइजिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हकीकत ना
पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. Four Russian tourists, one hotel in Raigada, and 2 mysterious deaths. Bittu Roy Chaudhary and Priyanka Sharma uncovered the story of Russians in Raigada. Russians in Raigada, Republic originals, this weekend only on Republic. हिम्मत है किसी को तो आरोप लगा ले। वो डरे, हम क्यों डरे? मित्रों, वर्तमान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली पॉलिटिकल विजन के चलते ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री को डिफेंस सेक्टर में आने के लिए इस तरह प्रोत्साहित कर रही हैं। यह स्वयं भी आप सबको एहसास होगा। क्यों सचिन? और हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक मात्रा में लगता है। यह मैंने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए अनुभव किया है। ऐसे में सभी कंपनीज के लिए सभी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत धन लगा सकेंगी, बहुत इन्वेस्ट कर सकेंगी। यह बड़ा कठिन काम होता है, सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में सभी कंपनीज के लिए एक बड़ी धनराशि लगाना मुश्किल काम था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बैंकिंग सेक्टर में अनेक रिफॉर्म किए हैं और उन्हें सशक्त बनाने के कई उपाय किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर
कुछ बैंकों को आपस में मर्ज किया, कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें नया जीवन देने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच है। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। और बैंक्स जो अभी तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका भी पुनरुद्धार किया है। और आज बैंक्स मार्केट में भी भलीभांति लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। यदि ऐसा न हो तो खुलकर आप इस सेमिनार में भी बतला दीजिएगा, यह सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी। कैपिटल मार्केट को भी हमने रेगुलराइज किया है और आज हम देख रहे हैं कि दूर दराज इलाकों तक से भी लोग सभी रिस्क समझते हुए मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं और मार्केट में कैपिटल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथियों, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर हम लोगों ने ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया है और विशेष मामलों में गवर्नमेंट रूट से 100% किया है कि आपको जानकारी है। हमारी डिफेंस जो कंपनीज हैं इससे डोमेस्टिक कंपनीज से लाभान्वित होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी तरह हमने सभी वे उपाय किए जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए कैपिटल उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। साथियों, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा, जैसा हमारे जनरल अनिल चौहान बतला रहे थे, एक निश्चित डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है। नहीं तो पहले ही तालियां बज चुकी हैं। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा मैंने तय कर दिया है। और आपको मालूम है कितना है? 68%। लेकिन जल्दी ही इससे भी अच्छी सूचना मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब इस पर भी तो ताली बजनी चाहिए। अब हमारे डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से इंडिजिनस डिफेंस आइटम्स खरीदे जाने में ही खर्च होगा और इस तरह डोमेस्टिक कंपनीज के पास एश्योर्ड डिमांड्स सुनिश्चित हो सकेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और अभी तक तो कैपिटल एक्विजिशन का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए था, इसका 25% प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी था। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कोई कठिनाई न हो, लेकिन और चिंता मत करिए, और बढ़ेगा आगे। और आप सभी अवगत हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक 400 से अधिक डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की 4 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है, इसकी जानकारी आपको मिली है। लेकिन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा भी यह काम किया गया है। 3 लिस्ट जारी की गई है जिनमें 3700 से अधिक लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और अन्य कंपोनेंट्स हैं। तय किया है कि यह आइटम्स भी दुनिया के किसी दूसरे देशों से हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। यानी कहीं ऐसा न होने लगे कि इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म तो देश में बनाए जा रहे हैं। वो सिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और रोजगारी देने का वादा अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है। ये 2 ही रोजगारी दे सकते हैं। 22 करोड़ का राज्य अगर रोजगारी के लिए चिंता करे बगैर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाता है, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि एमएसएमई के लिए जो पॉलिसीज बनाई है और एमएसएमई के ऊपर जो योगी सरकार ने थ्रस्ट दिया है, वो आने वाले दिनों में रोजगारी का निर्माण करेगा और रोजगारी के निर्माण से कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम रिपेयर होगा, अच्छा होगा, खुशनुमा होगा और इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। मित्रों, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ढेर सारे राज्यों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा मुख्य सचिव जी से निवेदन है कि बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपका पॉलिसी पढ़ा है, इसको और स्ट्रेंथन कर, बहुत अच्छा किया है मगर और स्ट्रेंथन हो सकता है और मजबूत और पुख्ता हो सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि
बड़ी इंडस्ट्री की सफलता के लिए भी अच्छा MSME इंडस्ट्री की बहुत जरूरी। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के पास ढेर सारी संभावना पड़ी। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे मेहनत कश इंसान अगर कहीं पर है, किसान कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे विपुल मात्रा में पानी अगर किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरीज, इसकी अपार संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है। मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया, और मुझे भी इस पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी ने दिया है। मैं बहुत समय से लगभग 32-33 साल से सहकारिता के साथ जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, हमने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया, मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बाइलॉज बना दिए। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC को पैक्स के लिए परमिट कर दिया। गैप ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया। राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्यता ऋणदाता संस्थान भी बना दिया। जैन पोर्टल पर खरीदी की कोऑपरेटिव्स को छूट दे दी। नेट के अंदर 18% से घटाकर 15% किया। आयकर अधिनियम में भी ढेर सारी राहतें दी। कोऑपरेटिव चीनी मिल को इनकम टैक्स के अंदर रियायतें दी, और 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाई हैं। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन में जोड़ेगी, दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाले किसान को अपने खेत में मार्केट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़े, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाएगी, और तीसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात के लिए भी काम करेंगे। ढेर सारे चीजें हमने इसके साथ जोड़ी है। इसमें भी विपुल संभावना है। आने वाले 2 महीने के अंदर ही मेरा सिर्फ कोऑपरेटिव के एक्सटेंशन का देश भर का दौरा है। मैं उत्तर प्रदेश भी आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे कम कोऑपरेटिव रखने वाला प्रदेश है और सबसे ज्यादा संभावना रखने वाला प्रदेश है। तो विपुल मात्रा में कोऑपरेटिव की संभावना यहां पड़ी है। मित्रों, यहां पर जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और मैं मानता हूं कि राज्य में इतने सारे एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य में नहीं बने होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बलिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगामी गंगा एक्सप्रेसवे, ढेर सारे एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को, इतने बड़े राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आज कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था भी हुई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद सबसे ज्यादा आवाजाही की कैपेसिटी एयरपोर्ट की किसी एक राज्य की होगी तो वो भी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। बुंदेलखंड के अंदर पानी की किल्लत थी, केन बेतवा आगे बढ़ गई। बुंदेलखंड में भी अब कभी अकाल सहन न करना पड़े, इस प्रकार की हमने नीति करी है। और PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जलमार्ग से लेकर सारे प्रकार की गति को कोऑर्डिनेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहला जलमार्ग उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है, और यहां से वाराणसी और इलाहाबाद से लेकर हावड़ा तक पूरा जलमार्ग बनने से
आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 1/3 से भी कम होने वाली है। बहुत बड़ा पोटेंशियल खड़ा करता है उद्योगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का संकट था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के आने के लिए पहले मैंने कहा 5 संकटों को योगी जी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और एक जमाना था जब इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली जाकर करनी पड़ती थी। आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट और दुनिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट लखनऊ आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो वातावरण जो सुधार हुआ है, इस वातावरण से उत्तर प्रदेश को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विपुल मात्रा में रोजगारी की संभावनाएं बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के युवा उद्योजकों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के माध्यम से भारत के विकास को भी गति मिलेगी और मोदी जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्वप्न है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। मैं आज यहाँ इस मंच से योगी जी को और उनकी पूरी टीम को, सारे मंत्रिमंडल को और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। आपका ये साहस सफल हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री बढ़े और उत्तर प्रदेश। So that was Union Home Minister Amit Shah at the UP Investors Summit addressing the investors who've gathered there with a multi-billion investment in the state of Uttar Pradesh. अन्य सभी मान्यवर महानुभाव, आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं।
साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा, तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा, मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा, देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं, उस एक बात को आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं, इतनी ठंड में आप क्यों कर सुनाते? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है
कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तो सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं, वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं, तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है, बिल्कुल वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया। और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है जी। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और आज वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी मिशन के साथ अल जमायातुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है, तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा। इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में यूनिवर्सिटी भी खुली है। मेडिकल एजुकेशन जैसी फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप देखिए, 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। बीते 8 वर्षों में देश में, और एक खुशी की बात है,
देश में हर सप्ताह एवरी वीक एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज खुले हैं। एवरी वीक। ये स्पीड और स्केल इस बात के गवाह है कि भारत उस युवा पीढ़ी का पुल बनने जा रहा है जो विश्व के भविष्य को दिशा देगी। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हमारे आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता बनी रह सकती है। इसलिए देश ने शिक्षा व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया है। ये बदलाव है एजुकेशन सिस्टम में स्थानीय भाषा को महत्व देना। अब हम देख रहे थे सारा गुजराती में जिस प्रकार से कविता के माध्यम से जीवन के मूल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की। मातृभाषा की ताकत, मैं गुजराती भाषी होने के कारण बहुत शब्दों को से ऊपर उस भावना को पकड़ पा रहा था, मैं अनुभव कर रहा था। साथियों, गुलामी के समय अंग्रेजों ने इंग्लिश को ही शिक्षा का एक पैमाना बना दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हम उस हीन भावना को ढोते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब के बच्चों को, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग को हुआ। प्रतिभा होने के बाद भी उन्हें केवल भाषा के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी स्थानीय भाषा में की जा सकेगी। इसी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बदलाव किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने पेटेंट इकोसिस्टम पर काम किया और पेटेंट फाइल करने को आसान बनाया है। आज आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों में पहले से कई ज्यादा संख्या में पेटेंट फाइल हो रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उपयोग होने लगा है। अब युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे हमारे युवा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था। इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था। लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए
जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे। साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टैक्स है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। बीच में मैं मंगोलिया गया था, तो मंगोलिया में हस्तप्रद भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजें थी, अब वहां पड़ी थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं, और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर विश्व के सामने सामर्थ्यवान होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वहन करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी कामना और इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया। सैयदना साहब का विशेष प्यार रहा है। पार्लियामेंट चल रही थी, फिर भी मेरे लिए यहां आना उतना ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए मुझे आज आकर के
आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. His Holiness Dr. Sayyidna Sahib, Honorable Prime Minister Sahib ने હડિયો પેશ કરીને એનું ઓનર કરે છે, તકદીર કરે છે. सगला प्लीज अपनी जगह पर खड़ा रहिए. Request all to stand to bid farewell to the honorable guests. Well, that was the Prime Minister interacting with the Bora community in Mumbai, where once again Prime Minister spoke about his deep connections, deep relationship with the community, which goes for about 4 generations. These are the latest images now coming in from Mumbai. On the other side, UK review report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. Major faux pas by Gehlot reads out last year's budget. Defense only one page got misplaced. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था।
Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन? पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। The UK report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism inflaming anti-India sentiment. After Himanta's tough action, the NCPCR chief is asking states now to follow suit on child marriage. Ashok Gehlot reads out last year's budget for several minutes. The BJP is mocking this faux pas. The Prime Minister inaugurates the new campus of the Sci-Fi Academy. He calls himself member of the Bohra community. The Indian Army Field Hospital gets operational in Turkey. India's Operation Dost now is in full swing. And skipper Rohit Sharma's century puts India on the driver's seat on day 2 of India versus Australia match.
A very good evening and thank you for staying with us on Republic. I'm Deepthi Sachdeva. Let's begin this edition of the news with our spotlight on the big story developing in from the national capital. Was there a Snoop-gate attempt by the Aam Aadmi Party? Remember, you've seen a lot of charges versus counter charges flying on that big story. In a massive expose now, Republic has been able to access certain sensational documents. These are documents on Arvind Kejriwal's feedback unit, where the insider reveals the functioning of this entire unit. It's a 3-page letter to the Vigilance Department that has been accessed. And we'll also have our colleague Piyush joining us on the story in just a bit to get you more details of what we do know on this document that has been accessed. Piyush is joining us live right now. He has more details. Piyush, first up, explain to us the context of this entire document. Why is this important? What does this document read? What do we know about it so far? Well, Deepthi, it is a very important document which we have accessed. In fact, it is a letter which was written by the Deputy Director or Director of Feedback Unit, which was established by the Delhi government soon after Aam Aadmi Party formed its government in 2015. Now, this 3-page letter is the part of investigation. In fact, it is one of the crucial evidences there with CBI as far as its investigation into the alleged snooping scandal in Delhi is concerned. According to this letter, the Deputy Superintendent of Police of Bihar cadre, Shams Afroz, was made to join the feedback unit in 2015. And then he, after joining the department, on the very next day, the special advisor to Delhi Chief Minister R.K. Sinha was made the whole soul of the entire unit. What he is mentioning in his letter that an exclusive chest was bought and 2 keys were made of that particular chest, and the locks of those chests were open only and only when these 2 keys were used simultaneously. So that's a very big allegation which is being leveled by Shams Afroz. In his letter, he, while addressing to the Special Secretary of Vigilance Department of Delhi Vigilance team, has said as to how the chest was created and funds those were received were kept in that particular chest. In fact, he's also adding as to how in 2016 itself 5 lakh rupees were received by the feedback unit, and out of these 5 lakh rupees 50,000 were used to disburse payments of the works those were so far were done by the feedback unit. He's also adding about the fact as to how R.K. Sinha, the then special advisor to Chief Minister Arvind Kejriwal, was made the whole soul and he was supervising each and everything. So he is categorically mentioning as to how the feedback unit was working. He wrote that letter in September 2016 to Special Secretary of Vigilance Department of Delhi government to red flag the kind of usage of funds those were being done. Let us also tell to our viewers that now CBI has requested Delhi LG V.K. Saxena to do a thorough inquiry, threadbare inquiry into this entire case, and LG has also approved the same. Though the Delhi government claims that these are bogus allegations, BJP is now seeking answers from Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. All right, Piyush, you know, these are very, very serious charges. We'll have to wait and see what the Aam Aadmi Party says and does, whether they even want to respond to that big revelation. For the moment, thank you so much for breaking down details of that story. 3 more survivors were pulled from beneath the rubble of collapsed buildings across Turkey early Friday. In Adiyaman, a 36-year-old was rescued after being trapped under the rubble for over 100 hours. In Diyarbakir, a woman and her son were rescued 4 days after the catastrophic earthquake killed more than 20,000 people in Turkey and Syria. Turkey's disaster management agency said that 18,342 people have been killed in the disaster so far, with 75,000 injured. No figures have been released on how many have been left homeless, but the agency said that more than 75,000 survivors have been evacuated to other provinces. More than 3,300 have been killed on the other side of the border in war-torn Syria, bringing the total number of dead to more than 21,600. Agency report Republic TV.
1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब Welcome back and thank you for staying with us on Republic. Away from the chatter, away from the politics, this is an extremely important story that we are bringing to you next, because for the very first time you have the Geological Survey of India making a big announcement. They say lithium deposits have been found in the Riyasi district of Jammu and Kashmir. Now, what really could this mean? This is a big push when it comes to development. Lithium, remember, is again an important ingredient, not just in the automobile sector, also when it comes to making semiconductors and a lot of other important gadgets. So could this just be the beginning of a very, very important breakthrough? You're looking at more details and images that have been shared by the Geological Survey of India in what is now being termed as a major breakthrough. For the first time in the history, the lithium reserves have been found in India and in the Riyasi district of Jammu and Kashmir. Right now we are reporting from the Salal area of the Riyasi, where these reserves of the lithium have been found, and this is for the first time that lithium reserves have been found in the country. Earlier India has been importing them from the various countries, Italy being one of the biggest manufacturer with 9.3 million tons of the reserves. I'll request Sir Jeevan to
show you these mountains. These are black rock mountains from where there was a GSI survey that was going on. Actually, it was for the bauxite, but during the survey, it came into being that there are reserves of lithium, and it came out after survey and approval from the GSI that it is 5.9 million tons of the lithium reserves, lithium inferred resources that are available in this area. I'll request Sarjeevan to first generally show you the general stretch of the area. This is the general stretch of this Salal area, Salal Himlani area, which is in the Riyasi district. And then I'll request Sarjeevan to move this way so that we can show you some of the rocks. These are the black rocks that are here. These have some markings by the Geological Survey of the India. These are the rocks. I'll request Sarjeevan to show you that these are the rocks which contain some of the amount of lithium in it, and they have been marked by the Geological Survey of India. It is not only here, but many of the rocks here that are here, small rocks, they have been marked by the teams of GSI. These are different small rocks, big rocks, and multiple kind of multiple rocks are here that are said to be the source of lithium here. Sarjeevan is showing you the visuals of some of them. So this entire stretch of the Salal, this has this kind of mountain ranges, the black mountains that are throughout this very area, and 5.9 million tons is the lithium inferred resources that are here as per the Geological Survey of the India. So this will not only give a boost to the EV industry, but also to the public exchequer and economy, especially of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as very soon it will be put to auction by the J&K government, and then will flow the extraction of the lithium from the Riyasi district of Jammu. We head into a break right now. On the other side, more details of this big story developing in from the state of Rajasthan, where Ashok Gehlot is reading out the last year's budget on the presentation day, and when he's checked, he says, "I only read one page that was accidentally placed in the budget." Amity University is establishing a most advanced supercomputing facility for research and innovation in the field of artificial intelligence. Scientists and researchers passionate to make a difference in the field of artificial intelligence are invited to contact at ai@amity.edu. पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend.
1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। China lashed out on US House's resolution that condemned China over the balloon incident. China's foreign ministry spokesperson expressed dissatisfaction and political manipulation of the balloon incident by US. Earlier, the US House of Representatives had passed a resolution to condemn China for sending a spy balloon to US airspace. China has firmly and constantly denied the US allegations. China insisted the balloon was a civilian airship used for weather research. China also pointed out that it does not have relevant information regarding the equipment that the balloon had carried. The US Secretary of State Anthony Blinken has postponed a high-stake visit to China after the balloon was found over US airspace last week. Agency report, Republic TV. We head into a break right now. On the other side, skipper Rohit Sharma's century puts India in the driver's seat on day 2 of India versus Australia match. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेस Leading from the front, Rohit's century has put Team India in control on day 2 of the Border Gavaskar series first match. Indian skipper Rohit Sharma makes a record first ever Indian captain to score century in all 3 formats. We are into a break right now. On the other side, UK report warns of Islamist and pro-Khalistani extremism inflaming anti-India sentiment. Amity University is establishing a most advanced supercomputing facility for research and innovation in the field of artificial intelligence. Scientists and researchers passionate to make a difference in the field of artificial intelligence are invited to contact at ai@amity.edu.
1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. So congratulations the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS 07 satellite in its पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्ड, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन,
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू। Mysterious deaths in the heart of Odisha. Bittu Roy Chaudhary and Priyanka Sharma uncover the story of Russians in Raigada. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। Thank you for joining us on the biggest story tonight. I'm Niranjan. It's 7 p.m. Some heartwarming pictures coming in from Turkey, but also some tragic stories of people who failed to make it out alive from the rubble. Our focus in the next few minutes will be on
the rescue mission in Turkey, and the role that Team India is playing with Operation Dost. Over 300 personnel on the ground trying to do all they can in this hour of need, standing with Turkey and Syria. Here are the headlines tonight on the biggest story. India goes all out in Turkey with Operation Dost. Pakistan's talks with the IMF hit a dead end officially. UK officially now acknowledging and warning of an anti-India plot. They are flagging off the Khalistani extremists and the radicals from Pakistan who are now in the UK. NCPCR responding to what Himanta Biswa Sarma is doing in Assam, fighting child marriage, saying other states must also follow that model. Can you believe it? For 7 minutes, Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan, delivered an old 2022 budget. He didn't realize it for 7 minutes until he was stopped. Getting in the pictures first up on top of the biggest story tonight as rescuers continue to pull out several people alive from the shattered remnants of what is left behind, buildings. Some continue to be pulled out alive. Those who've survived for over 100 hours trapped under crushed concrete in the bitter cold after the catastrophic earthquake that hit Turkey and Syria. Over 20,000 people have died in Turkey and Syria. The survivors included 6 relatives today. The pictures that came in, let's play out the pictures as they came in, who were huddled in a small pocket under the rubble, among whom some stories of teenagers who drank their own urine to stay alive. Those are the kind of stories that are coming out of Turkey as defying all odds. Many children included are being rescued alive. And let's tell you that the magnitude 7.8 quake has already killed more than Japan's Fukushima earthquake and the tsunami, with more bodies yet to be recovered, yet to be counted. But the story this evening, as we get you the story of the role that India is playing on your screen right now, are the Indian personnel. Team India, they're calling it Operation Dost. 3 days back, India sent relief materials, a mobile hospital, a specialized team. That was 4 days back. 4 days back, we sent about 4 C-17 Globemasters military aircraft to Turkey to support the search and rescue ops. That is increased manifold. Each day there is more and more relief supplies that are being flown to Turkey and Syria. More aircrafts now leaving the airports in Delhi carrying relief materials that are being dispatched every single day. As of this minute, India officially has over 300 trained personnel on the ground. Let's play out some of those videos as they came in. This is one video that came in of the NDRF at work. We just had that video come in. That is the NDRF at work. Another video that came in this morning of the Indian Army, which has mobilized the field hospital, providing medical support to the earthquake-affected people of Turkey in line with the government's decision to provide support to both Turkey and Syria. Now, the Agra-based Army Field Hospital has dispatched earlier, about 2 days back, an 89-member medical team, and this medical team comprises critical care specialists, and the contingent includes orthopedic surgical teams, general surgical specialist teams, and medical specialist teams, apart from others. Now, the teams are equipped with X-ray machines, ventilators, oxygen generation plants, cardiac monitors, and associated equipment to establish a 30-bed medical facility. And this was on Monday. And since then, even the field hospital operations have grown. In fact, over 100 injured are being treated, we are told. That's a video that came in. I'd like to play out some of the videos that we're getting in from Turkey, from the Army Field Hospital.
And that's the picture that everyone is talking about. The army with one tweet that was put out saying we care, and greeted by the people of Turkey in this hour of need, who saluted our forces, saluted India's efforts in helping Turkey in this hour of need. Those were the pictures coming in. In fact, that moving picture of an army officer being hugged by those affected, those getting help from the army field unit. In fact, this is the photo of an Indian Army woman personnel receiving a warm welcome from a Turkish woman while on rescue and relief work in Turkey. And the video that was tweeted by the army with the caption "We care," shared by the official handle of the Additional Directorate General of the Public Information, or ADGPI, and this picture is being spoken about. Now, why are we showing you these pictures? Why are we showing you these pictures? Because India has gone all out, and Turkey in the last 8 to 9 years, ever since Modi government came in, has been targeting India specifically on global platforms, including at the United Nations, speaking in a very pro-Pakistan line, attacking India at every given opportunity. But when Turkey needed help, India has gone all out to help Turkey in their hour of need. In fact, we were one of the first responders, sending out rescue and relief teams within hours so that people of Turkey can get help with a humanity-first approach. In fact, the Turkish ambassador there, seen in the video, assisting and at the airport, thanking India and the NDRF and the forces who are getting on that plane. This was his message when he spoke to the media yesterday. Operation Dost is a very important operation, and this is the operation of friendship, because Dost is a word in Hindi and Turkish which means friends, and this operation shows our friendship between India and Turkey, and friends always help each other. I remember 2 years ago in May 2021, I was exactly in this airplane, and Turkey sent 2 aircrafts loaded with COVID medical assistance. Now, after 2 years, now we have 2 huge devastating earthquakes in Turkey, and India is sending now search and rescue teams to Turkey. So because friends, real friends, help each other in their days if they are in need. It will be helpful for Turkey? Of course, because what we would need in Turkey, especially in the first 72 hours, is search and rescue actions together with emergency medical aid. And everything is, the start of the Operation DOS. It includes search and rescue teams and emergency medical aid. That's why it's very helpful. The current situation is quite critical in Turkey. Yes. It all rises to near about 10,000. How would you look at this situation? Sorry? It's too loud, yes. How would you look at this situation? That call is near about 10,000. It is almost 10,000, but we are racing against time. And there are still so many, rebels, and the operation is continuing. Our government's bodies are also overall. There are more than 15,000 Turkish troops, rescue operations, doctors, and so on. They are Turkish Red Crescent is also there, and they are working there, and now also some foreign teams. So they are doing their best. They are working day and night in order to rescue people. Last question to you, sir. The relationship between India and Turkey. Sorry? The relationship between India and Turkey will improve after both the relationship between India and Turkey. As I said, this is a symbolic operation, Operation DOS. It's always already proves that we are friends. It will improve international relations. Why not? Of course, we have to deepen our relations. Yes. Thank you. Thank you very much. Even Turkey saying that what has happened in the last 2 days, proving that India is a closer friend than they initially thought. And that's one message that was posted by the same ambassador who was speaking there. And that was a note that went out with one of the consignments
people of India responding in large numbers. In fact, this one note was tweeted saying that one person, in fact, a family from India sent blankets, people sending whatever little they can. Kuldeep, Amarjeet, Sukhdev, Gaurav, that was a photo that was tweeted, a note with the consignment that was sent as Indians gather whatever they can and send it for the people of Turkey. And there is also a list, meanwhile, if anyone of our viewers wants to sort of contribute, the Turkish ambassador to India has put out a list of what Turkey needs, what the people of Turkey need at this moment, as over 20,000 of them have lost their lives. You can also pitch in every little way possible. Let's get you some stories now. Turkey and Syria, reeling with the aftermath of the most deadliest earthquake that's hit them. India, along with several nations, have stepped forward to help the quake-hit nations recover. India so far has sent 6 plane loads at least of relief material. Rescue personnel, over 300 to Turkey and Syria following the earthquake. Operation Dost in full swing. The deadliest earthquake of the century has devastated Turkey and Syria. The death toll has crossed 20,000. Several nations have joined hands to help the quake-hit nations. India was an early responder and launched the Operation Dost. Operation Dost aims to provide rescue and medical relief to Turkey and Syria. So far, 6 Operation Dost flights have reached Turkey. The Indian Army team of medical specialists are on the job 24/7, providing relief to the injured. Specialized search and rescue teams of NDRF have saved many lives, and the rescue operations are still on. On Indians stuck in Turkey, the MEA has said that the embassy is ascertaining their well-being. With the death toll rising with each passing day, India's Operation Dost ensures every possible help to the ailing nations. Bureau Report, Republic TV. Several countries, over 50 of them, are involved in the rescue and relief operations in both Turkey and Syria. Here are some more stories coming out of Turkey, as reported by the Associated Press. The deadly earthquakes in Turkey and Syria killed over 20,000 civilians. While Turkey lost most of its resources, rescue workers are leaving no stones unturned to save one and all. And in one of the rescue attempts, a 10-year-old girl was rescued in Antakya district of Hatay province in the 90th hour since the earthquake. According to sources, the rescue workers worked 32 hours at the site to clear the passage. Watch how the little girl gets pulled out who was stuck under the rubble. According to medics, they had to amputate an arm to free her from the rubble because removing the block that was crushing her would have endangered her life further. Meanwhile, hundreds of thousands were left homeless by the earthquake centered in southern Turkey, having to endure cold weather and lack of resources, with hopes fading of many people being found alive in the ruins. The clock is ticking and the rescue workers are giving it all to save each and every life. The world is praying for Turkey. Republic is praying for Turkey. Agency report, Republic TV. And a few minutes back, even the Prime Minister has tweeted saying that the nation stands with the people of Turkey and that our teams are working day and night as part of Operation Dost. That is, the Indian teams are working day and night as part of Operation Dost. They will keep giving their best to ensure maximum lives and property are saved. It's the Prime Minister sending a message to the people of Turkey and also Syria, adding that they will ensure maximum lives and property are saved, and in this critical time we stand firmly with the people of Turkey. A very symbolic, powerful message going out from India, especially at a time when Turkey in the last few years has spent all its time and energy targeting India and the Indian government. Here's another report from earlier today when ISRO touched a historic milestone. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Beautiful launch of SSLV D2 07 on a bright sunny morning. So congratulations, the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS 07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS 07, two more satellites were also placed in the required orbit, Janus 1 through NSIL and from the Antares, and Asadisat through InSpace realized by the Space Kids. So congratulations to all three satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1, and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity. And I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality in flight. So we have also a good news that the orbit achieved by the vehicle today, using its very novel, cost-effective and very innovative guidance and navigation system, is exceedingly good. We were targeting to put it in a 450-kilometer orbit. We have very close apogee and perigee, as well as inclination is very small error only. And this also shows that the new model of the vehicle navigation system and electronics that you incorporate in SSLV is doing very well. When we come back, getting you more details of UK report, a government report in the UK warning of Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot read out his last year's budget and passed it off for this year's budget for almost 7 minutes. He's facing criticism for the faux pas. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे Getting in some breaking news, there was a video that emerged on Thursday that showed some of the opposition MPs shooting proceedings in the House, and a Congress MP has now been suspended. Taking serious view of dissemination of a video relating to proceedings of the House on Twitter, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has today suspended Congress MP Rajani Patil from the proceedings of the Rajya Sabha for the remaining part of the current session for acting in violation of the directions of the chair. Jagdeep Dhankar has said the Rajya Sabha chairman has said in public domain yesterday on Twitter there was a dissemination of a video relating to proceedings. I took a serious view of it and did all that was required as a matter of principle and to keep sanctity of parliament. No outside agencies' involvement could be sought. That was the message. In fact, leader of the House Piyush Goyal also raised the issue in Rajya Sabha, saying that they are seeing videos recorded in the House showing senior members of parliament unauthorizedly being recorded. That was the video that was recorded and circulated by this Congress MP and has now been suspended. Taking a short break now, back with the top headlines next. Amity University is establishing a most advanced supercomputing facility for research and innovation in the field of artificial intelligence. Scientists and researchers passionate to make a difference in the field of artificial intelligence are invited to contact at ai@amity.edu. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी।
पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई, मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई, मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी Viewers, it's time for Superfast 50 this Friday evening. I'm Shivangi Shukla. Let's get started. PM Modi inaugurated the Vande Bharat Express to Shirdi in Nagpur today. On the occasion, the Prime Minister said that Vande Bharat is aimed to connect all the pilgrim sites. PM also inaugurated the new campus of the Al Jamiatus Safia at Marol in Mumbai. Now, the Al Jamiatus Safia is the principal educational institute of the Dawoodi Bohra community. The health of former Uttarakhand CM Harish Rawat has become worse during a protest against the government. Rajasthan CM Ashok Gehlot on Friday today accidentally read the old budget speech for 7 minutes before being interrupted. He was later stopped by the chief whip. Supreme Court has asked the centre to respond on a Monday if some strengthening of regulatory regime is required to protect small investors in stock market following the Hindenburg report on Adani Group. The Congress President Mallikarjun Kharge has taken a jibe at Adani. He insisted for an inquiry into the Adani scam. The chairperson of National Commission for Protection of Child Rights now has said that he has welcomed the Assam government's step to constitute a panel to frame policy to rehabilitate child marriage victims. Amid declining COVID cases, Centre has relaxed travel norms for passengers from 6 Asian countries. From Feb 13th, the government will do away with uploading of pre-departure COVID test results and self-declaration forms on Air Suvidha portal.
13 people have been arrested in Uttarakhand after unemployed youth protesting in Dehradun. The protesters were demanding a CBI inquiry into the recruitment irregularities. Lithium deposits found in Jammu have now been approved by Geological Survey of India. The GSI has found 5.9 million tons of lithium inferred resources in the area of Jammu. Finance Minister Nirmala Sitharaman has taken a jibe at the Congress party's dynasty politics during her speech in Lok Sabha today. She said that we make policies keeping everyone in mind. We are not the party that supports Jijas and Bhatijas. It is a culture of Congress. सर दूसरा एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। Foreign Secretary will be on official visit to Nepal from 30 to 14 February. During the visit, the Foreign Secretaries of India and Nepal will hold discussions on the entire range of multifaceted cooperation between the two countries. Adani Group has hired a US law firm to fight against the allegations leveled by the Hindenburg report. A shocking news from Kerala as education enabler known as E.S. Bijumon, who has received a President's Award, died by suicide at his home in Kerala. He allegedly committed suicide as the government had not paid his due honorarium for the last 6 months. Supreme Court has dismissed the PIL seeking complete ban on BBC and BBC India from Indian territory. Gaurav Gogai the Congress MP has taken a jibe at the crackdown on child marriages in Assam. He said girls under 18 who are pregnant are choosing to deliver their child at home, not going to the hospitals because they are afraid of getting their fathers and husbands arrested. They will be reported upon and their fathers will be also arrested or their husbands will be arrested. So there are many such cases that pregnant women who have married before 18, instead of delivering their children inside hospitals, are choosing to deliver inside their homes, making the pregnancy and the childbirth unsafe. Controversy over Tipu Sultan is refusing to die down, with BJP National General Secretary C.T. Ravi accusing the Congress of doing politics on the policies of the ruler. Ahead of state budget session for 2023-2024 Karnataka Congress, in fact, we are getting to know that the BJP has no plans for polls. In a major breakthrough against Canada-based terrorist Lagbir Landa's criminal network, Jalandhar police has arrested Vijay Kumar, wanted in 18 cases of drugs, illegal weapons, kidnapping and extortion, arrested 3 other associates. A massive landslide occurred in the Ramban district in Jammu Kashmir. The traffic movement on the Jammu-Srinagar highway has been suspended till the clearance is assured. The Prime Minister took to Twitter to praise the on-ground NDRF and army in Turkey. The medical and rescue teams are sent to Turkey as part of Operation Dost. Defence Minister Rajnath Singh, speaking at the Global Investors Summit, said that the country's defence industry's self-reliance is attracting people from all over the world. बयान यह हुआ कि वेपन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की आपूर्ति के लिए हमने दूसरे देशों की सहायता ली और कब यह सहायता हमारी हैबिट बन गई, आदत बन गई, यह हमें पता भी नहीं चला। पर आज जब मैं सरकार और इंडस्ट्री के अथक प्रयासों से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं, तो मैं मान सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब सुरक्षा हो या फिर आर्थिक समृद्धि
यानी हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हमारा देश पुनः अपना वही गौरव हासिल करेगा जिसका वह हकदार है। The anti-encroachment drive carried out by the DDA earlier today, locals have claimed that their houses are not illegal. Delhi police and CRPF personnel deployed on the spot. Mukti Morcha patriarch Shibu Soren was hospitalized while with breathing difficulties, but his condition is now stable. An official of the hospital where he is undergoing treatment has said this. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Friday has suspended Congress MP there, Ashok Rao Patil, for the remainder of the current budget session for filming House proceedings. Union Minister Amit Shah, on the occasion of UP Global Investor Summit, praised the government's work for the MSME industry. इंडस्ट्रीज चाहिए। अगर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए आपने अनुकूल वातावरण, अनुकूल माहौल यहाँ पर नहीं किया है, तो दूसरे राज्य से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सारी लगती है और इंडस्ट्री सफर करती है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री आती है उसको सफल होने के लिए भी एंसिलरीज इंडस्ट्री मतलब एमएसएमई की जरूरत है, और इसके साथ साथ आज की एमएसएमई में ही कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुई है। बच्चों को प्लेटफॉर्म देने से ही प्रदेश हमेशा आगे आता है। Sanjay Prasad, UP Home Secretary, on the occasion of UP Global Investor Summit said that investors from all corners of the world have to, in fact, come to UP. The Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, remarked that his message to India is to have talks. Subsequently, the spokesperson of Pakistan's Prime Minister's office has reiterated Pakistan's various preconditions to holding any talks with India. The deadlock persists between Pakistan and International Monetary Fund as the two sides have failed to reach the staff-level agreement to unlock the USD 1.1 billion loan tranche after 10 days of tough talks. The development comes as negotiations which took place between IMF and Pakistan from January 31st to February 9th concluded in Islamabad. The IMF's mission has arrived in Islamabad to hold talks with Pakistani authorities. The political rivalry between Ibrahim Mohamed Soli, the current president of Maldives, and Mohammad Nasheed, both belonging to the same parties, making the country suffer, and China is becoming the ultimate benefactor. After India constantly warned of Islamist terror threat, reports on UK government's counter-extremism program has called for its focus to shift towards Islamist terrorism. Radicalization of UK Muslims over Kashmir by hardline Pakistan clerics and pro-Khalistan movement have been identified as emerging terror threats. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim has urged fellow member states of the Association of Southeast Asian Nations to take new measures in pressurizing military-ruled Myanmar to end what he called the junta's atrocities against its own people. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has visited an aid hub in Adıyaman, a town devastated by the catastrophic earthquake earlier this week. The government has distributed millions of hot meals as well as tents and blankets, but was still struggling to reach many people in need. Emergency crews made a series of dramatic rescues in Turkey, pulling several people, including children, from the rubble 4 days after a catastrophic earthquake killed more than 21,000 people. An Israeli aid delegation to Turkey rescued a 10-year-old boy trapped in the ruins. Throughout the day, the Israeli humanitarian aid delegation rescued 8 trapped civilians. Moldova's government collapsed as pro-Western Prime Minister Natalia Gavrilita has resigned, adding to a series of crises that have gripped the small nation since Russia invaded its neighbor, Ukraine. As invading Russian troops launched a major offensive in the eastern Donbas region near the town of Kremina and pressed fierce assaults during the Battle of Bakhmut, Ukrainian authorities have added this and confirmed.
According to a senior U.S. State Department official, the suspected Chinese spy balloon was shot down with the U.S. military over the Atlantic Ocean was capable of conducting signals intelligence collection operations. The official further said that the Chinese balloon had flown over more than 40 countries across 5 continents. Response to the White House's statement, all suspected spy balloons being a part of a PRC fleet of balloons developed to conduct surveillance operations. The Chinese Foreign Ministry said that the U.S. overreacted by using force. Chinese Foreign Minister Mao Ning further added that the narrative is probably part of the information and public opinion warfare that Washington has waged on China. A Russian court sentenced a former regional governor to 22 years in prison after finding him guilty of murder in a case that triggered massive protests 2 years ago. It's time for all the sports action now, viewers. The third edition of the Khelo India Winter Games kicked off in Gulbarg in Baramulla, district of Jammu and Kashmir, and Union Youth Affairs and the Sports Minister Anurag Singh Thakur declared open the games. Over 1,500 sportspersons from across the country will be participating in 9 different winter sports during the next 5 days. Skipper Rohit Sharma hit 120 in Nagpur as India extended their lead to 144. India were 321-7 at stumps with all-rounder Ravindra Jadeja on the second straight day of his international return with an unbeaten 66. R. Ashwin becomes second fastest bowler to take 450 test wickets, only behind Sri Lanka off-spinner Muralitharan. It took Ashwin just 89 matches to achieve the feat as compared to Muralitharan's 80 games. Virat Kohli fails to end Test century drought since 2019, falls victim to Australian spinner Todd Murphy. Virat Kohli was dismissed for 12 runs from 26 balls just after the game resumed after lunch. The semi-finals and final of the 76th National Football Championship for the Hero Santosh Trophy will be held abroad for the first time ever. According to officials, the matches are set to take place between March 1st and March 4th in Saudi Arabia. Cristiano Ronaldo scores 4 times for Al Nassr, goes past 500 goal mark in club career. He hit 3 for Sporting Lisbon in his fledgling career, 103 for Manchester United over 2 spells, 311 for Real Madrid and 81 at Juventus. German extreme athlete Savas Koban has set a new world endurance record after completing a staggering 86 ultra marathons in as many days in Peru. He covered a total of 5,000 plus kilometers with more than 100,000 meters of climb across every climate zone and region in Peru. Central Coast Mariners edged Brisbane Roar 2-1 to go second in the A-League standings. Mariners took the lead on 19 minutes through the Marco Tulio before the Brazilian was conceded a penalty just 2 minutes later. That paved the way for J. O'Shea to level matters from the spot in 23rd minute. And Arizona will host its 4th Super Bowl, the 3rd of the State Farm Stadium on Sunday. Experiences helping the Valley prepare for the surge in travelers and event goers. A day after the 2015 Super Bowl set a single-day record for passengers traveling through Phoenix Sky Harbor International Airport at an estimated 1,75,000 figure. पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story
Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. So congratulations the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS 07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS 07, 2 more satellites were also placed in the required orbit, Janus-1 through NSIL and from the Antares, and Asadisat through InSpace realized by the Space Kids. So congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1, and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity. And I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality in flight. So we have also a good news that the orbit achieved by the vehicle today, using its very novel, cost-effective and very innovative guidance and navigation system, is exceedingly good.
We were targeting to put it in a 450 kilometer orbit. We have very close apogee and perigee, as well as inclination is very small error only. And this also shows that the new model of the vehicle navigation system and electronics that you incorporate in SSLV is doing very well. Viewers, Turkey and Syria are reeling with the aftermath of the most deadliest earthquake that hit them. India, along with many nations, have stepped forward to help the quake-hit nations recover. India so far has sent 6 plane loads of relief material, rescue personnel to Turkey, Syria following earthquakes. Operation Dost is in full swing. Take a look at this report. The deadliest earthquake of the century has devastated Turkey and Syria. The death toll has crossed 20,000. Several nations have joined hands to help the quake-hit nations. India was an early responder and launched the Operation Dost. Operation Dost aims to provide rescue and medical relief to Turkey and Syria. So far, 6 Operation Dost flights have reached Turkey. The Indian Army team of medical specialists are on the job 24/7, providing relief to the injured. Specialized search and rescue teams of NDRF have saved many lives, and the rescue operations are still on. On Indians stuck in Turkey, the MEA has said that the embassy is ascertaining their well-being. With the death toll rising with each passing day, India's Operation Dost ensures every possible help to the ailing nations. Bureau Report, Republic TV. China lashed out on US House's resolution that condemned China over the balloon incident. China's foreign ministry spokesperson expressed dissatisfaction and political manipulation of the balloon incident by US. Earlier, the US House of Representatives had passed a resolution to condemn China for sending a spy balloon to US airspace. China has firmly and constantly denied the US allegations. China insisted the balloon was a civilian airship used for weather research. China also pointed out that it does not have relevant information regarding the equipment that the balloon had carried. The US Secretary of State Anthony Blinken has postponed a high-stake visit to China after the balloon was found over US airspace last week. Agency report, Republic TV. Russian tourists, 1 hotel in Raigada, and 2 mysterious deaths. Bittu Roy Chaudhary and Priyanka Sharma uncovered the story of Russians in Raigada. Russians in Raigada, Republic Originals, this weekend only on Republic. Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic Originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन,
और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Mysterious deaths in the heart of Odisha. The inside story. Russians in Raigada, Republic originals this weekend. 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था? 3 मीटिंग हुई 25 मई, 27 और 29 मई। मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग। जनरल वद्दा की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। और ब्लू स्टार में भी SFF कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जब पंजाब में लॉयलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल जिया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को खराब नहीं कर सकता था। Burning Question, presented by Samsonite, powered by XUV400 and Cool Fans. A very good evening. Thank you for staying with us on Republic. The show is called The Burning Question. I'm Deepthi Sachdeva. We are putting our focus today on a story that is developing in from the state of Telangana. That is going to be polling at the end of this year. That's going to be somewhere in December of 2023. And when you have netas from different political parties who begin with their attempts to polarize, one understands this is the election season. But the point is, how far will we allow our netas to go? Can they continue to provoke? What about issues of development? That's going to be our top focus. First up, the headlines on Top of 8. UK report warns of the Islamist and pro-Khalistani extremism, inflaming anti-India sentiment. After Himanta's tough action, the NCPCR chief asked states to follow suit on child marriage. Ashok Gehlot reads out last year's budget for several minutes. The BJP mocks this pop-up. Prime Minister Modi inaugurates the new campus of the Saifi Academy. He calls himself member of the Bohra community. The Indian Army Field Hospital gets operational in Turkey. India's Operation Dost now is in full swing. Skipper Rohit Sharma's century puts India on the driver's seat on day 2 of India versus Australia match. So the state is Telangana. Like I said, Telangana is going to be voting
somewhere in December of 2023. This is a state that the BJP has been eyeing for some time. This is KCR's only bastion. This is also the state that KCR believes can help him actually launch his national ambitions with. The reason why he changed the name of his party from the TRS to the BRS. But what has happened now? What has happened is that BJP state president, his name is Bandi Sanjay, has made a provocative comment. He says in case the BJP is voted to power, which he is assuming will happen very, very soon in the state of Telangana, he says the BJP will not talk about education, will not talk about development, but instead what he says is that we will break down the domes of the new secretariat that has been constructed by KCR at a cost of over 400 crores. This, remember, secretariat is going to be inaugurated by KCR on the 17th of this month. Owaisi has also jumped into the entire controversy. Remember, the attempt is clearly to polarize. And he says, why are political parties talking of bringing down structures that they believe are replicas or remnants of the Nizam culture, but not talking about development instead? So let's bring up the entire story first up, and then we debate. The new secretariat at the state of Telangana is the pet project of the Chief Minister KCR, which has now become a focal point of political fighting in poll-bound Telangana.